Hello. Hello. Check. Yes, so may I request both the captains to please get at the center page for the toss off the last league match in this GSC T20 match number 28. Team Warriors versus Team Chargers. A very, very crucial match because the victory for any team in this match will really shuffle the teams on the points table. They have indeed qualified for the knockouts, no doubt about it. But this match is to get to the number 2 spot, and once you get to the number 2 spot, you get an extra chance to make it to the grand finale. That really is the key. Two evenly balanced teams up against each other, two very good teams, two teams that are really picking at the right time. Team Chargers and Team Warriors. To do the honors of the toss, we have got governing council member Uday Bhai Jain, and alongside him it will be Mr. Agarwal. Mr. Agarwal, who is the dad of Daksh Agarwal. These two gentlemen will do the honors of the toss. And of course, we've got founder member KK Jain Saab alongside them. Both the captains all ready. Even Hemang Bhai Pandit is there. Daksh Agarwal and Dun Somaya. Okay. Both the captains in all readiness. Governing council member Uday Bhai Jain to flip the coin of this last league match. Match number 28. It will be Daksh Agarwal who really will take the call. Here we go. 3, 2, 1. Heads is the call from Daksh, and it is tails. Yes, Dun. किस तरह की धुन आज बजाओगे? क्या की आज हम लोग बॉलिंग लेंगे पहले। कोई विशेष कारण आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का? हाँ, एक्चुअली रन रेट के ऊपर है आज पूरा हम लोग का मैच। टॉप 2 में आने के लिए तो हम लोग को फास्ट खेलना पड़ेगा आज, तो रन्स पता चल जाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। यस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आपने क्वालिफाई तो किया है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये नंबर 2 पर कौन सी टीम जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी टीम नंबर 2 पर पहुंचती है उससे एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई करने के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। तो हम लोग फ्रीली खेलने वाले जो भी है, क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज, और वो भी फ्रीली खेलेगा। हम लोग दोनों टीम क्वालिफाई है, तो आज अच्छा क्रिकेट खेलने को दिखेगा। तो Any drastic changes in your playing 11? no, only 2 changes right now. Yes, wishing you the very best. May you guys have a good game. Daksh, as I mentioned, it's a very, very important match. Qualify तो कर गए, लेकिन वो नंबर 2 स्पॉट पर जाना है, ताकि इन केस ऐसा सिनेरियो हो कि पहला मैच आप हारते हो तो एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है ग्रैंड फिनाले। एंड दिस गेम इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनी, सो यू नेवर नो। Yeah, actually, we're looking to play quality cricket for the next 3 hours. You know, that is what is going to decide who's going to take the number 2 spot. It's either them or us, or it can be Super Kings also. So we'll just try to do what we've been doing since the last 6 matches. We'll try to end the league matches on a very good note. And yeah, we're looking for the top 2 position, like I already said. And how's your playing 11 looking like? The playing 11 is fine. You know, the team has shaped up really well since the start. I haven't had any issues, but there's only one change that's coming in. Narendra Jadeja comes in place of Sneh. Okay, there's a change from team Chargers, and we'll all get together for the customary team photograph along with the guests. Yes, here we go.
Yes, Karan Singh Bhai Walia is here at the right time. Superb timing. चलो गणपति बप्पा चलो क्या बात है all the best. The news from the center is that Doon has won the toss and team Warriors have elected to field first. They've invited the opening pair of team Chargers to take first guard. Yes, a cheery good evening, and let's all have a look at the center pitch. Today we've got a fresh wicket, different wicket from the wicket that we played the match on yesterday, and this wicket too looks absolutely dry. And yes, it's kind of hard making a good noise, but there you can see a few cracks at the good length spot. Maybe in the second half, this cracks might simply start to open. Otherwise, this looks like a hard and nicely rolled wicket. Indeed, once again, the spinners will really come into play, but you'll have to be a quality spinner to really get the better of the accomplished batsman. The grass at this end particularly is nicely rolled, a tinge of grass definitely. So at the start of the innings, there will be something for the seamers, and the climate dynamics indeed aiding some seam bowling. That's it from the center, the pitch report. Thank you so much. Once again, meeting you with live action in just a while. Yes, Aslam Bhai is also here. A warm welcome to him. So this side, to your left. All the best. यस हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मैच के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत यहाँ पर मौजूद है दमन से केतन भाई पटेल यहाँ पर मौजूद है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. Yes, cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. आप सभी का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब लीग में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं. आज का ये मैच राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट का सबसे आखिरी मैच और सबसे महत्वपूर्ण मैच होगा. टीम वॉरियर्स और टीम चार्जर्स के बीच ये मैच. टीम वॉरियर्स ने इस मैच के टॉस को जीता है, गेंदबाजी करने का एक अहम फैसला लिया है, आमंत्रित किया है टीम चार्जर्स की सलामी जोड़ी को कि वे पहले इस विकेट का उपयोग करें. ये दोनों ही टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है पहले 4 टीमों में, लेकिन आज का ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच बिल्कुल तय करेगा कि कौन सी टीम इस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 के पोजीशन पे जाती है. जैसे नंबर 2 पोजीशन पर आप जाते हो तो जो कि आईपीएल का फॉर्मेट है उसी तरह का हमारा फॉर्मेट है यहाँ पर, क्वालिफायर, एलिमिनेटर, सेकंड क्वालिफायर. तो जो भी टीम नंबर 2 के स्पॉट पर जा पहुंचती है उससे एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, वो जबरदस्त कुशन मिलेगा. जिस तरह से फ्री हिट में बल्लेबाज आउट नहीं होगा और एक बोनस होता है, उसी तरह से नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट्स पर जो 2 टीम्स है उन्हें एक फ्री हिट जैसा सिनारियो इस पॉइंट्स टेबल पे मिलेगा. इस सिनारियो को देखते हुए आज का ये मैच बहुत ही तगड़ा मैच. 2 ऐसी टीम सामने सामने है जो कि बिल्कुल सही वक्त पर पीक करती हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. दोनों युवा प्रतिभाशाली
कप्तान है। यस, और हमारे आदरणीय नामदार असलम शेख साहब भी इस मैच में खेलने वाले, एक बहुत ही अहम कड़ी है, ना केवल एक सीनियर खिलाड़ी के नाते बल्कि टीम ओनर भी है। और असलम भाई जब कभी मैच खेलने आते हैं तो एक नई किस्म की, एक विशेष किस्म की ऊर्जा सभी प्लेयर्स में होती है। तो मैं असलम भाई का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद क्रिकेट से नाता उन्होंने तोड़ा नहीं, और जब कभी मौका मिले क्रिकेट के लिए हर वक्त हर पल किसी भी तरह से अपने शेड्यूल में से वक्त निकालते, ये बहुत ही अहम बात है। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भाई, एंड वार्म वेलकम टू जूट सिंह, ऑल्सो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स फ्रॉम टीम कस्टम्स। वेलकम जूट भाई। या ठिकाणी मालवणी पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय पीआय सूर्यवंशी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे। गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने मी सूर्यवंशी साहेबांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांना मी विनंती करेन की आपण काही वेळ या ठिकाणी थांबावं आणि या मॅच चा आनंद घ्यावा। आणि खऱ्या अर्थाने एक अपराइट डायनामिक पोलीस ऑफिसर सूर्यवंशी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे। गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने मी मालवणी पोलीस स्टेशनचे पीआय सूर्यवंशी साहेबांचं या ठिकाणी परत एकदा मी सहर्ष स्वागत करतोय। Call KK Jains up to flip the coin. Here we go. Heads is the call from Daksh. It is tails. Kingshuk, you won the toss. What are you doing? We're gonna bat first. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. हेलो। यस, चले बस अगले कुछ ही क्षणों में आज का ये महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर मार्गस्थ होगा। और
इस मैच के महत्व को देखते हुए यहाँ पर मैच के पहले ही आज काफी बड़ी संख्या में सभी दर्शक, दोनों ही टीम्स के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है और ये बिल्कुल जायज भी है, इस बात में कोई संकेत नहीं है। आज का ये मैच एक तरह से मैं बिल करूंगा दोनों कप्तानों के बीच, दून सोमैया वर्सेस दक्ष अग्रवाल। और अगर वाकई में स्टार प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आज का ये मैच आर्यन पटनी वर्सेस अनिकेत कवाड़े होगा। ये दो ऐसे प्लेयर्स है जिनकी एवरेज इस टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा है, 135 से ज्यादा मेरे ख्याल में आर्यन पटनी की है। लगातार 4 इनिंग्स नॉट आउट रहे, 3 half centuries and a century to his name in the last 4 innings. He's carried his bat in all those crucial matches, so really living up to the reputation of being the best player in the tournament. And of course, yes, he was really the most expensive player at the auctions and living up to the reputation in grand style. And Aniket Kawade, what a champion player he is. Once again, under each and every pressure situation, Aniket Kawade is delivering the goods. A very, very important link in the lineup of Team Warriors, no doubt about it. Both the umpires in all readiness. Our senior umpire Vishwas Rao sir, and alongside him the young up and coming umpire Kiran Purandare, and happy in all readiness with the white lady in his hand. Yes, here we go. Purandare taking that white ball away from Happy's hand, and there really is a very, very keen buzz at the start of this match. This really will give goosebumps to so many of us at the ground, just thinking of the prospects of this very, very important match. A big, big welcome to all the viewers linked with us on YouTube and Facebook, and इसी तरह से आपका साथ अगले 5 दिनों तक बना रहे। कुल मिला के आज के इस मैच को पकड़ के आखिरी 5 मैचेस आने बाकी है। राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट का ये आखिरी मैच, ये केवल पॉइंट्स टेबल पर टीम्स के शफलिंग के लिए ये मैच होता हुआ देखना है कि कौन सी टीम उस नंबर 2 के स्पॉट पर आती है। जैसे ही आप नंबर 1 या नंबर 2 के स्पॉट पर जा पहुंचते हो, आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है। Yes, points table on screen. Riders number 1, 12 points. आज चार्जर्स इस मैच को जीतता है तो 12 अंकों पर जा पहुंचेगा, लेकिन नेट रन रेट देखिए राइडर्स का 2.246, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जैसी चट्टान पर नेट रन रेट के माध्यम से पहुंचे हैं। तो उस नेट रन रेट को कैचअप करना ये बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। तो चार्जर्स मेरे ख्याल से उस बात को जहन में नहीं रखेंगे, वो महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स लेना ये उनका मुख्य हेतु होगा। सुपर किंग्स ने अपने 7 मैचेस खेल लिए, नंबर 3 स्पॉट पर है, नेट रन रेट 0.545, और वॉरियर्स नंबर 6 के स्पॉट पर है, 4 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, 6 पॉइंट्स, 6 मैचेस एंड 8 पॉइंट्स टू वॉरियर्स। ये 7वां मैच, आखिरी मैच। ये मैच अगर वॉरियर्स से जीते तो नंबर 2 के स्पॉट पर जा सकते हैं, लेकिन वो नेट रन रेट का मामला होगा, नेट रन रेट का मसला होगा। यस, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, बिल्कुल ठीक समय से 7 के पहले यानी कि 7-8 मिनट बाकी, और बिल्कुल अनुशासन का यहाँ पर पालन करते हुए बिल्कुल सही समय पर, इनफैक्ट बिफोर टाइम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा सा बिफोर टाइम हम इस मैच को शुरू करते हुए, और कल की तरह आज भी इस मैच में ओपनिंग करने के लिए एक नायाब हीरा आर्यन पटनी और उनके साथ उज्जवल गोयल, जो कि बिल्कुल सही वक्त पर इस टूर्नामेंट में पीक करते हुए ये एक one of the best formidable opening pairs in this tournament. Ujjwal and Aryan Patni once again will take first strike against Team Warriors. Team Warriors, having won the toss, have elected to field first. Yes, can we have Aryan's profile on screen?
My name is Aryan Patni. I'm a right-hand batsman and a right-arm spinner. My favorite shot is the cover drive. As conveyed by our chairman sir Karan Bhai Singh Walia, कल का match first qualifier होगा. There is no change in the schedule and the show must go on. The first qualifier will be played tomorrow as per the schedule. Yes, playing 11 of Team Chargers on screen. Daksh, the captain, Aryan, Happy Bhai, Parag, Mohan, Vivek Bhai, Narendra, Nishil, Rajesh Patni, Sachet and Ujjwal. The playing 11 of Team Chargers and अब Warriors के playing 11 की तरफ रुख मोड़ते हैं in just a while. Yes, Warriors playing 11 led by Dun, Aniket, Anurag, Aslam Bhai, Gurmukh, Evin, Vishal, Saurabh, Ram, and Parth. And yes, of course, Shrey as well. The playing 11 of Team Warriors, the playing 11 list has been exchanged. The playing 11 list is with us. The final round robin league match about to get underway. A very important match which will really decide which team gets to that very crucial number 2 spot. Both these teams have qualified for the playoffs. It is the spot that they are really looking out for. Here is Mayura is already here quite early today. Yes, Ujjwal, who had played such a good innings yesterday, once again on strike, and to give him company at the non-strikers, and Aryan Patni. Okay, the man with the number 34 jersey, Anurag, to bowl from the commentary box. And can we have the countdown? Yes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Yes, indeed, it's playtime. Here we go. Yes, a good start here. That was a purposeful run. That was a quick call from Aryan and nicely responded to by Ujjwal. Yes, it's great that so many supporters are already in to cheer both the teams. We've got Dr. Suman Kalani, the Vice Principal of Mitibai College, to cheer the camp of Team Chargers. We also have Sarita Rathi and Anju Chaudhary from Baroda. A cheery good evening to all the ladies. Dr. Suman Kalani, Vice Principal, Mitibai College, Sarita Rathi ji and Anju Chaudhary ji from Baroda, all the way from Baroda. This is good news and a warm welcome on behalf of GSC. Yes, they all members of GSC. Yes, indeed, a surprise element being floated by Dun. For the first time in this tournament, this guy is opening the bowling attack. Definitely an element of surprise.
Not easy to bowl with a new ball, especially when you're looking to grip the ball. Yes, it's a very steady start here for Anurag. He's really bold in the business areas. He's been absolutely right on the money. A good start. Lots of cricket left to be played in this match. Ujjwal, the man on strike. The score at this point in time for Team Warriors, 4 runs for the loss of no wickets. Straight to Aniket, a good piece of fielding, a quick return as well, but enough time for Aryan to scamper home for that quick run. The score at the end of the first over is 5 for no loss. Lots and lots of cricket left to be played in this one. इस मैच के टॉस को जीता है टीम वॉरियर्स ने और गेंदबाजी करने का अहम फैसला लिया और एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे उन्होंने अनुराग को गेंदबाजी का भार थमाया और पहले ओवर पर रन संख्या है 5 रन बिना कोई नुकसान के. Yes, may I request one extra player from both the camps? Saurabh Loya. Saurabh to bowl from the far end. This is a big responsibility on his shoulders, bowling with the new ball. This is a very key match and really needs to deliver the goods as he is one of the key links in the bowling lineup of Team Warriors. A very experienced bowler. He's had a reasonable tournament here. Yeah, that was a no ball and will be a free hit. Not the ideal start, and this is a welcome scenario for Team Chargers. The man on strike who's going through a honeymoon phase, Aryan Patni. Yes, we saw it on screen. Good camera work, just about the right call. पटकी हुई गेंद फ्रंट फुट पर ही खड़े खड़े पुल किया. जिस तरह के बैटिंग फॉर्म में है आर्यन, बड़ी आसानी से उस पुल शॉट को फ्रंट फुट पर खेला है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बेहतर, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में है. बड़े आत्मविश्वास से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए आज का ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. आर्यन इज फाइटिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ एवरेजेस. अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, पूरी तरह से सम्मान देते हुए बिल्कुल अपने सर के नीचे गेंद को खेला उज्जवल ने. Ujjwal is really the rising star here at the Goregaon Sports Club. Is starting to make a name for himself as we really approach the qualifying stages. He's in great nick. This is good news for Team Chargers. केवल दिशा दी, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. नजाकत भरा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग. ये एक superb cricketing shot. One would have traveled miles and miles to watch that kind of a shot. An absolute delightful shot. Exquisite timing, the placement absolutely spot on.
dot shot boundary quite early in the innings here for Ujjwal Goel. First dot shot boundary coming in this second over. Yes, indeed, he's got a job cut out for himself here. So, Saurabh, as both these batsmen are in scintillating form, they're in good touch, so will not be easy to bowl to them with this new ball, especially when they are batting on such a great surface. The ball nicely coming on to bat, making the life of the batsman that much more easy. A very good delivery. Just look at his effort and just look at his follow through. This is brilliant cricket. Indeed, Saurabh is so very talented. The other day he picked up the Man of the Match award. There were two contenders, Saurabh and Aniket, for his innings of 80 plus, but at the end of the day, it was Saurabh who picked up the Man of the Match award. Yes, the kind of line that Saurabh is bowling and the kind of pace that is generating, that man in the deep point and the man at the third man will really be kept quite busy. He's getting some good perches of the wicket, good seam presentation. The ball is hurrying onto the bat. Still early days for this man, Saurabh. Indeed, there is a certain buzz in the air as this important match has just about got underway. As I mentioned, those two men, the man in the point region and the third man region, will be kept busy today, no doubt about it. Score at the end of 2 overs, a reasonable start here for both the teams, 13 runs. Anurag will continue with this spell. He's really been the surprise element as far as team Warriors is concerned. Having won the toss, they have elected to bowl first, and for the first time in this tournament, it's been Anurag to open the bowling attack with the spinners from the commentary box, and the man on strike will be the man in good touch, the man in ominous form, Ujjwal Goel. बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी गेंद और एक अच्छा कनेक्शन भी था. बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नजर आते हुए उज्जवल, बहुत ही सटीक बल्लेबाजी करते हुए. जो शॉट्स उज्जवल लगातार 3 दिनों से यहां पर दर्शा रहे, बहुत ही अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स है. Growing in confidence, growing in stature. It's not just making a good statement, but he's starting to give such a good account of himself in this tournament now. Ujjwal, and Aryan is absolutely awesome. अच्छी गेंद वहां पर बीट हुए आर्यन. हार्डली कोई ऐसा ओकेशन इस टूर्नामेंट के दरमियान हम लोगों ने देखा है जब आर्यन बीट हुआ है. रेयर इंस्टेंस.
दो नायाब हीरे आज इस मैच को खेलते हुए, अनिकेत कवाडे और आर्यन पटनी। देखना है कि इन दो नायाब हीरो में से कौन से प्लेयर को कोहिनूर हीरा का खिताब आज इस मैच के अंत में प्राप्त होता है। क्योंकि ये सभी प्लेयर्स अब अपना आखिरी मैच खेल रहे, काफी समय से गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में मिलजुल कर खेलते, तो एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है। दे रियली नो ईच अदर लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स। देखिए, चलिए, ऑरेंज कैप बिल्कुल एक कोहिनूर हीरा वेदांत गाड़िया। 7 मैचेस, 387 रन्स, हाईएस्ट ऑफ 141 नॉट आउट, 59 बाउंड्रीज टू वेदांत एंड 7 सिक्सेस टू हिम एज वेल। एंड वो ऑरेंज कैप बड़ी सच धज के वेदांत गाड़िया के सर पर संवरती हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 14 रन बिना कोई नुकसान के। जबरदस्त क्रिकेट स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये पहले 3 ओवर्स में देखा है। प्रेशर सिचुएशन है, देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बट यस, दिस इज indeed a great contest between bat and ball. अच्छी गेंद, बीट हुए वहां पर, कटर गेंद थी, पहले ही अपने शॉट को खेल लिया था। भाग्यशाली रहे कि वो गेंद गेंदबाज के सर के ऊपर से निकली और नो मैन्स लैंड में गिरी। कोई खतरा नहीं, बिल्कुल महफूज। लेकिन अच्छी गेंद, जैसे अपने स्पेल में अब आगे बढ़ रहे सौरभ, उतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अब गेंदबाजी करते हुए। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सकारात्मक आज नजर आती हुई। देखिए लेंथ कितनी सटीक है और लाइन भी काफी अच्छी, किसी भी तरह से कोई रूम नहीं दिया। ये एक बिल्कुल आइडियल लाइन एंड लेंथ डिलीवरी है। इस नई गेंद से थोड़ी सी शरारत कराने में कामयाबी हासिल होती हुई यहां पर सौरभ को। अच्छा उपयोग करते हुए इस नई गेंद का, प्रश्न चिन्ह पूछते हुए हर गेंद के साथ। अब बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, वाइडिश मिड ऑफ पर अनिकेत मौजूद। केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करना होगा। रन संख्या उस एक रन के साथ इस चौथे ओवर में जा पहुंचती है 16 रनों पर। इस महत्वपूर्ण मैच में हम सभी के मार्गदर्शक सतीश अग्रवाल साहब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग सतीश जी। कुलदीप पाजी सर का भी हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोनों ही हमारे सीनियर्स मार्गदर्शक। ग्रेट टू हैव यू जेंटलमैन। रवि झुंझुनवाला जी का भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, गुड इवनिंग टू ऑल द गेस्ट्स। वाकई में बेहद युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज सौरभ, इसके पहले के मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल हुआ था और आज इस महत्वपूर्ण मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सटीक गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, मंजे हुए खिलाड़ी। ऐसे हालात में ये दोनों ही बल्लेबाजों को बांधे रखना अपने आप में एक बेहतरीन कोशिश है। बिल्कुल जिस विश्वास को कप्तान धून ने सौरभ पर जताया, उस विश्वास पे पूरी तरह से खरे उतरते हुए आर्यन पटनी बिल्कुल एक नायाब हीरा। क्या प्लेयर है, क्या फोकस्ड प्लेयर है।
स्लोअर लेग कटर करने का प्रयास किया था। अच्छी कोशिश, अच्छी सोच, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था, लेकिन एक अच्छी कोशिश थी और सोच पॉजिटिव है। विकेट्स लेने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब इस तरह के क्रूशियल मैच में आप चैंपियन बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करते हो तो पॉजिटिव रहना होता है। विकेट लेने के लिए आपको गेंदबाजी करनी होती है, और बिल्कुल यही पेश करते हुए यहां पर सौरभ। देखिए किस तरह से तकनीक पर तवज्जो देते हुए यहां पर इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे आर्यन। कितने फोकस्ड है, कितना कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और ताकत का त्रिवेणी संगम इस युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज के पास। बिल्कुल एक बेहतरीन टेम्परामेंट के धनी है। जैसे कि मैंने कहा कि अब जैसे हम ये क्रूशियल स्टेज पर जाते हैं नॉकआउट मैचेस में, द मेंटल टफनेस विल रियली बी द की। Nicely turned away around the corner. That was too short. That was a couple of yards short, and see the way he's pounced on that loose delivery. Yes, this is the first dot shot boundary coming off the blade of Aryan in this crucial match. The square end of 4 overs, 22 for no loss. That wasn't a bad delivery by any stretch of my imagination, but simply a case of the batsman being so good in such prolific form that he really pounced on that loose one. Turning it round the corner with soft hands. Yes, चलिए देखते के पर्पल कैप किसके मत्थे इस वक्त सवरती है। संजीत श्रीवास्तव 7 मैचेस में 18 विकेट्स लिए हैं। बेस्ट ऑफ 4 for 16 संजीत श्रीवास्तव। व्हाट अ टैलेंट इज। द साइलेंट असैसिन हम उसे कहते हैं, अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। नई गेंद के साथ गेंदबाजी नहीं करते हैं, 12 ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं, यानी कि यस कुलदीप सर, गुड इवनिंग, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। अनुराग अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे। 2 ओवर्स में केवल 6 रन दिए अनुराग ने। एक बहुत ही सटीक स्पेल किया है, एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी धून ने सौंपी है और बखूबी उस भूमिका को निभाते हुए बेहतरीन फील्डिंग। ये देखिए, ये जब मैं कहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल एक जंग का ऐलान हुआ है यहां पर दोनों ही टीम्स की तरफ से। देयर इज नॉट ounce of charity in this match. This is going to be very tough on both the teams. Not an inch given and not an inch will be taken. This match is really going to be very close. Two great teams, two very evenly balanced teams, two teams that are starting to pick in this tournament up against each other to grab that crucial number 2 spot. Nicely cut away. Such a good connection. The bat meeting the meatiest part of the blade. Absolutely the center of the bat.
bowling in that channel of uncertainty outside the off stump. He's been absolutely brilliant here, Anurag. रुक कर अपने शॉट को खेला, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट है. थोड़ी सी मिसफील्डिंग और वहां पर विकेट गिरा. यस, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, एकमात्र विकल्प नजर आ रहा था कि रनआउट हो गए. थोड़ी सी मिसफील्डिंग, ये बिल्कुल सही दृश्य जब मैं कहता हूं कि इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल. अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था, रुक कर कलाई के सारे पंच किया था, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा पिकअप एंड थ्रो, बिल्कुल सही एंड पर फ्लैट थ्रो किया था. This is superb cricket, man, and Ujjwal will not be happy. The kind of batting that both these batsmen were displaying, run out seemed the only option, and they have indeed sent him back to the pavilion courtesy run out. This could really be the exact scenario that the team Warriors were looking forward to when they won the toss and elected to field first that crucial wicket of Ujjwal. Will it set the cat amongst the pigeons is the big question here. But indeed a very crucial breakthrough. Yes, can we have the captain's player profile on screen? Daksh. My name is Daksh Agarwal. I'm a right-handed batsman and a left-arm spinner, and my favorite ball is the arm ball. Yes, Daksh has promoted himself up the order. He really wants to make sure that he plays the sheet anchor role to perfection. He will make sure that his team reaches a fantastic tally on the board. Just a kind of situation that somebody like Daksh will flourish in. A very dynamic player and a captain who is really provide the right kind of environment to all his players to flourish. He's been a brilliant captain. He's a brilliant player, a blockbuster package in the form of Daksh. For the moment, Anurag to Aryan. Aryan will not show it that he is slightly affected, courtesy that run out of Ujjwal, but he will have that incident at the back of his mind, no doubt about it. But he's got to take it in his stride and he's got to compensate now that much extra. So he will be looking to cement yes, two key batsmen at the wicket for team Team Chargers. Indeed, they bat deep down the order, but this two batsmen really hold the key. Yes, डॉट शॉट बाउंड्रीज की तरफ रुख मोड़ते स्क्रीन पर वेदांत गाडिया ने सबसे ज्यादा चौके लगाए इस टूर्नामेंट के दरमियान, 59 चौके. 2 नंबर पर अनिकेत कवाड़े जो कि सेकेंड हाफ में एक्शन में नजर आएंगे, उनके बल्ले से हमें 35 डॉट शॉट चौके देखने को मिले. आर्यन पटनी जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, उनके बल्ले से 34. जैसे ही एक चौका लगेगा, अनिकेत एंड आर्यन विल बी टाइड. रोहन गज्जर हु इज played out those 7 round robin league matches, वो नंबर 4 के स्पॉट पर 29 चौके. Yes, indeed, the most precious player for team Chargers, Aryan Patni. But if I have to say that one player who's the heart and soul of team Chargers, it is indeed the captain Daksh, the heart and soul, no doubt about it. This whole team is revolving around Daksh. A very positive character. देखे किस तरह से अपने उस शॉट में लीन किया दक्ष ने, कितना एफर्टलेस. दिस इज ऑल क्लास. वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट.
That shot will induce so much of confidence into the psyche of Daksh. That boundary coming in quite early. That will do his confidence a world of good. Sachet trying to bowl that Yorker length delivery. Saurabh. Change in line and length. Was slightly in an awkward position, Daksh, but nicely fended away with soft hands at the last moment. One run added with that single. The score in this sixth over is on to 35 for 1. Yes, हमारे काउंसिलर वीरेंद्र चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं. वेलकम जी. अनिल शर्मा जी का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं. संजय महेश्वरी जी का भी तहे दिल से स्वागत है. गुड इवनिंग जेंटलमैन. अच्छी टाइमिंग थी जिस वजह से गेंद बड़ी तेजी से बल्ले को स्ट्राइक करके पॉइंट के दिशा में गई. कोई मौका नहीं सिंगल लेने के लिए. काफी सूझबूझ से खेलते हुए. दैट रियली इज एन अंडरस्टेटमेंट जब मैं कहता हूं कि सूझबूझ से खेलते. करीबन हर इनिंग्स में सूझबूझ के साथ खेलते हैं. नाउ दिस हैज रियली बिकम अ स्क्रिप्ट फॉर आर्यन पटनी. बेहतरीन गेंद. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है आज यहां पर लोहिया ने. लगातार प्रश्न चिन्ह पूछे हैं और जब आर्यन जैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज को आप इस तरह से बीट करते हो तो वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पेश करते हुए. That wicket is eluded him. He's really bowled so well, but nothing to show in the wickets column. But it's been such a useful spell here. Just the kind of spell that Doon wanted from that new ball bowler. Missing his run up there. Once again, we'll have to go at the top of his run up to bowl that one. It's two top teams, two evenly balanced teams up against each other, and in the second half, this will indeed be a prime time drama. Nicely bowled. Yes. Getting beaten on 2 consecutive deliveries is something that we really do not expect from the man in form, Aryan, but that really is a testimony of the fact that Saurabh has really bowled brilliantly. बिल्कुल दक्ष वो विक्रमादित्य तीर है टीम चार्जर्स के लाइनअप में, जिस तीर के साथ पूरी तरह से टीम वॉरियर्स को धराशायी किया जा सकता है. इतनी काबिलियत है, इतना पोटेंशियल है, इतने सक्षम है दक्ष. इस तरह के T20 गेम में इस स्टेज पे गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. एक गलती आप कर जाओगे और बड़ा खामियाजा भुगतना होगा. बिल्कुल अब बिजनेस एंड आप पहुंचे इस टूर्नामेंट में. दोनों ही टीम्स जद्दोजहद करेगी इस पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 का स्थान हासिल करने के लिए, ताकि एक एक्स्ट्रा मौका मिले. बहुत ही जरूरी है कि इस मैच को जीते और नंबर 2 के स्पॉट पर जाए. यस, जैसे कि करण सिंह वालिया जी ने बताया कि नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट पर जो 2 टीम्स होगी उन्हें कल ठीक 6:30 बजे टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. 6 बजे जरूर आएंगे वार्म अप के लिए, बट कल का मैच नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट के 2 टीम्स के बीच. बिल्कुल शेड्यूल को हम स्टिक करेंगे.
फर्स्ट क्वालिफायर, बहुत ही अहम मैच, माउथ वाटरिंग प्रोस्पेक्ट, कल का फर्स्ट क्वालिफायर। बेहतरीन शॉट, सुपर्ब, दक्ष के बल्ले से ये दूसरा डॉट शॉट चौका निकला। देखिए कि क्या क्लास है ये प्लेयर का, कितना एफर्टलेस। यस, बिल्कुल अपनी प्रतिभा और हुनर का एक अच्छा परिचय देते हुए यहाँ पर दक्ष, बहुत सारा क्रिकेट खेलना शेष है। दिस अर्ली डेज, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। मैच बिल्कुल समांतर स्थिति में, इवन स्टीवंस एट दिस स्टेज। थोड़ी सी गेंद की लंबाई को खींचा, लाइन बिल्कुल वही रखी। चालीस रन एक विकेट के नुकसान पर, एक अच्छी नींव रखते हुए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, तो यही देखना होगा कि किस तरह की फसल कटती है, कौन सी टीम। डॉट शॉट बाउंड्री, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए अनुराग, और ये आखिरी ओवर में ही उन्होंने 2 चौके दिए। अब तक कोई चौका शायद नहीं दिया था, एक चौका पहले दिया था और थोड़े से महंगे साबित होते हुए, लेकिन कहना होगा कि काफी दिलचस्प इंट्रोडक्शन था अनुराग का बॉलिंग अटैक में, और उन्होंने अच्छी तरह से अपनी भूमिका को निभाया है। सराहना करना होगा, सराहना करनी होगी यहां पर अनुराग का। Dot ball and 2 more balls to come in this last over from Anurag. Aryan, the man on strike. That was pretty short, but fortunately for Anurag, just a single added. That was played with good timing, but could not pick a spot. Aryan straight to the man in the deep. A single added. The single takes the score to 45. Ample time for Daksh to go on the back foot. A piece of misfielding. Rare misfield by Aniket, where there should have been just 1 run, 3 extra runs given away. Looked slightly tired in that final over. Anurag taking some stick in that final over. That will really spoil his analysis. Anurag, at the end of his 4 overs, has given away 28 runs. Anurag gave away 14 runs in that last over. The first 3 overs went for just 14 and the last over went for 14. Yes, अगर देखते चले, अगर इसी करंट रन रेट से खेलते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर टीम चार्जर्स के लिए 140 का है। 8 रन से अगर आगे बढ़ते तो 153, 10 रन से आगे बढ़ते तो 179, और अगर 12 रन के रन रेट के साथ आगे बढ़ते तो 205 स्कोर बोर्ड पर नजर आएंगे। ये प्रोजेक्टेड स्कोर है टीम चार्जर्स के लिए। और कप्तान धून अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए फार एंड की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे आर्यन। एक शॉट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की, थोड़ा सा लॉस इन कंसंट्रेशन।
एक अच्छी शुरुआत दून की 50 runs up on the board for team Chargers. Off to a good start here. Lots of cricket left to be played. The match nicely poised, could be anybody's game. This is such a good tussle between bat and ball. एक टशन भरा मैच. अब पिछली खेला था लेकिन इंटेंशनल था क्योंकि लेग साइड पर सिंगल सेविंग पोजीशन में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है. बिल्कुल सेफ शॉट, इंटेंशनल था. बड़ी आसानी से एक रन प्राप्त किया. रन संख्या 51 रनों पर. Good wristy work. The scoreboard ticking in the form of singles in this over from Dun. देखते ही देखते केवल 7 गेंदों में दक्ष 3 डॉट शॉट बाउंड्रीज के साथ 15 रनों पर जा पहुंचे हैं. बहुत ही अच्छी गेंद. एक अच्छी शुरुआत धून के लिए. बिल्कुल सही लेंथ को यहां पर पकड़ा है अपने स्पेल के शुरुआत में कप्तान धून ने. बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है, जबरदस्त टैलेंट और बहुत ही ज्यादा सक्षम है धून. नजाकत से खेला, शायद इंटेंशनल था. डॉट शॉट बाउंड्री. That will really release the pressure of Aryan. And क्योंकि दक्ष के साथ बल्लेबाजी कर रहे आर्यन, तो एक अच्छा गाइड उनको दक्ष के रूप में प्राप्त होगा. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 57 रन्स जोड़े हैं टीम चार्जर्स ने. हम प्रितपाल सिंह महाराज का भी स्वागत करते हैं. One of the lead bowlers in this tournament, Pritpal Singh Bharaj. Yes, चलिए के तलसान्या कंस्ट्रक्शन सिक्सेस की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन से प्लेयर ने कितने छक्के लगाए इस टूर्नामेंट में. रोहन गज्जर 21, अंशुल जैन 16, चिंतन शाह 15 और अनिकेत कवाड़े 13. पार्थ शाह कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. दक्ष उन्हें फेस करेंगे. छोटी सी गेंद, देखिए किस तरह से पोजीशन में आए. बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं. स्क्वायर लेग फेंस के ऊपर से बिल्कुल एक 85 मीटर्स का वो छक्का. के तलसान्या कंस्ट्रक्शन 6 काफी अच्छे फॉर्म में पार्थ इस टूर्नामेंट में नजर आए हैं और आज ये इस महत्वपूर्ण मैच में काफी जल्दी उन्हें लय में आना होगा. गलती की कोई गुंजाइश नहीं. फिर से एक बार शॉर्ट गेंद और उसी तरह का शॉट और एक छक्का वहां पर is being taken to the cleaners. दक्ष देखिए किस तरह से पोजीशन में आ रहा है और यही फर्क होता है एक साधारण प्लेयर और एक चैंपियन प्लेयर में. चैंपियन प्लेयर वही होता है जो गेंद की लंबाई को बहुत ही जल्द भाप लेता है और उसे वो एक्स्ट्रा समय मिलता है पोजीशन में आने के लिए और यही दर्शाते हुए दक्ष. वाओ, fabulous batting, effortless. और किसी भी तरह से ज्यादा एक्सप्रेसिव प्लेयर नहीं है दक्ष. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हर वक्त दर्शाते, लेकिन ही रियली कूलली गोज अबाउट हिज बिजनेस. नॉट सो एक्सप्रेसिव ऑन फील्ड. That was going in with the arm. That's the ideal length to be bowling.
Yes, Parth is indeed one of the most important links. He's had a good tournament, and in this very, very important match, he has to find his bearings and be at its best. He's already been taken to the cleaners in this first over by Daksh, but still he'll have to make a comeback. Aryan living dangerously. पूरे टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखा है कि आर्यन एक या दो बार से ज्यादा बीट हुए, लेकिन आज 4 से 5 मर्तबा बीट हुए हैं. Living dangerously, but still is there. That really is the important thing. देखिए, जब मैंने 2 मर्तबा ये बताया कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जब आप इस तरह के स्टेज पे आते हो, जब चैंपियन प्लेयर्स के सामने आपको गेंदबाजी करनी है, तब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है. थोड़े से शॉट और दक्ष ने 2 छक्के लगाए. उन 2 छक्के के बाद अच्छी लेंथ उन्होंने स्ट्राइक की एंड ही वाज हिज यूजुअल सेल्फ. पार्थ, तो T20 गेम में किसी भी तरह से आपके पास समय नहीं होता है सेट होने के लिए, चाहे फिर आप बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें. यू हैव टू बी राइट ऑन द मनी फ्रॉम द वर्ड गो. दिस इज a big stage. You are a professional and no excuses. Parth will have to take this thing in his stride. He still has got ample time, and being one of the key bowlers, the captain Dhun will really want Parth to get over with his spell of all 4 overs. Next over will be drinks. Yes, we enter the 10th over. The next over will be drinks, and I hope Moira and Kosha are ready. Kosha is not there, but yes, Moira in the thick of things, and she will do her stuff here. With that couple, the score on to 73. Daksh, in a space of just 12 balls, has moved on to 31. Played with soft ends. Daksh knows that this is the last over before drinks and would ideally play orthodox cricket in this over, will not take unnecessary risk. They will be in consultation with amongst themselves and with the think tank during the drinks and interval, but this is an over wherein definitely they will treat the bowling on its merit. 75 for 1. 3 more balls to come in this 10th over from Dhun. Nicely played. Dhun is not such a tall guy, and he bowls pretty flat. Does not give the ball that much air on most occasions. He loves to bowl flat. Nicely played into the gap. A man in the deep stationed to exactly stop that kind of a shot. Just a single added. He's making batting look so easy. He's a class apart, Daksh. Nicely played, well timed. We'll have to wait and watch. A man in a pursuit covering the ground in long strides. A piece of misfielding. Dhun will be cross. This partnership is what, the 50 runs. Goodness me, what a stage and moment Daksh and Aryan have chosen to stitch such a fabulous partnership. Score at the end of 10 overs is a handsome 80 runs for the loss of just 1 wicket, and that wicket was courtesy run out. And yes,
it will be Moira to take over from me. The projected score at the halftime, if they play at this current run rate, which is exactly 8 and over, 160. If they play at 9, 10 and over, 180 will be on board. And if they play at something in the region of 12 and over, it will be exactly 200 runs on the board. A big thank you to both the umpires, umpire Vishwas Rao and Kiran Purandar, and in pretty good time to the pretty lady Mayura. मधु आंटी इधर आ जाओ. Good evening, GSC, and I'm back with questions and with gifts. Today I'm joined by two wonderful people, Nivrutti and Nagraj, and I'm going to ask them a few questions. Here, you can take the mic. So what brings you here? कैसा लग रहा है आपको? Typically जो question पूछते हैं हर Hi, good evening, everyone. Of course, the atmosphere and everything is मतलब electrifying बोलो. ऐसा लग रहा है literally stadium में बैठ के match देख रहे after a long time. So it's a wonderful feeling being here. So which team are you here to support? Gangster? दो टीम खेल रही है, Chargers and Warriors. Okay, I think the pink dress team is The pink team is Chargers. Chargers, yeah. They are batting. Yeah, they're playing really wonderful. नहीं मैंने No, when we entered, like they were playing really well, so we thought let's be on their side. So I'm going to ask you a cricket-related question. Sure. Okay. And if you get it right, this one you take home. Oh, with- wow. Okay. Question is, how many under-19 World Cups has India won? That's an easy one. 5. Great. Congratulations. Thank you. Oh, hope only one question. Only one question. Thank you very much. Thank you so much. I'm also joined by thank you so much. Sarita ji. आइए Sarita ji. And Madhu auntie. आइए Madhu auntie. And you are? Tavish. Tavish. So little Tavish is with us. Face the camera. बहुत ज़्यादा एक्साइट है. मेंबर भी है ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का, और एकदम इसको मैं बोली कभी रात में आता नहीं है, तो मैं बोली चलो मेरे साथ एकदम एक्साइट हो गया है कि मुझे तो आज जाना ही है बस दादी के साथ. क्या बात है. We are very happy to have you here. अभी कोई क्वेश्चन पूछूंगी आपको, जो आंसर बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगी. कोई गिफ्ट दे दो. Yeah. Where was the 1983 World Cup held? Lots. Congratulations, beta. I'll give you your gift right away. Over to the commentary box. Thank you. Thank you, Moira. A good answer. अभी देख के आया था ना मूवी में. चलिए फिर से एक बार पोस्ट ड्रिंक्स इंटरवल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. भाई देखिए, दक्ष को इतने ज्यादा मौके नहीं मिले बल्लेबाजी करने को इस टूर्नामेंट का दरमियान. वो खुद स्वयं पीछे बल्लेबाजी करने को आते थे, प्लेयर्स को मौका देते थे कि सेट हो. लेकिन आज एक क्रूशियल मैच और जिस तरह से आते ही बल्लेबाजी की शुरुआत की है, बेहतरीन, बिल्कुल क्लास अपार्ट.
और आर्यन आज क्रूज मोड पे नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष किया है, लेकिन दाद दूंगा कि he has put a price on his wicket. He is not throwing it away. He is going to the grind. That is exactly the way to go about your business. और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है जब आपके सामने एक चट्टान जैसा प्लेयर दक्ष के रूप में मौजूद हो. Good bowling by Parth coming back. Nicely driven. Straight to Aniket. With that single, the score in this 11th over moves on to 82. The final ball to come in this 11th over. Daksh, the man on strike. Nicely driven into the gap. Aniket, the man in the deep. Not such a good effort. One more dot shot boundary to the blade of the dangerous looking Daksh. जब तक दक्ष विकेट पे है, खतरा मंडराता रहेगा टीम वॉरियर्स पर. इस मैच के टॉस को जीता था, ढूंढने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जबकि अब 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. रन संख्या 86, एक विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट 7.82. 9 विकेट्स हाथ में नींव रखते हुए जबरदस्त शुरुआत. बहुत सारा क्रिकेट खेलना बाकी है वॉरियर्स के लिए. अब बहुत ही जरूरी है कि इस जोड़ी को तोड़े. Yes, we'll have the sponsors on screen, supported by V Gold India Private Limited. A big thank you. Boundary sponsor Dot Shot. Sixer sponsor Ketal Sania Construction. The tagline Rising Boundless. Wicket sponsor Sejal Realty. Yes, Aslam Bhai is watching the match so keenly. He knows this is a very important match, and he's nicely preparing himself mentally, and is also warming up. And to guide him, he's got a very senior customs player, dear friend of mine, Jude Singh, alongside him. A warm welcome to Jude Singh. What a player Jude is. Can we have the bowler's name? Parth, who's the bowler? Evan, okay. Evan bowling from the far end. Into the gap, will be a dot shot boundary, picking up his gap so nicely. With that dot shot boundary, the score on to 90 for 1. Yes, there you can see the white Mercedes there. Big thank you to Auto Hanger. What a class piece of engineering. That Mercedes car. Simply awesome. Yes, अगर आपको उस कार के बारे में information चाहिए तो you can walk into their stall. They have got their team to guide you. Evan bowling from a very short run up, but he's putting a lot of effort in his delivery stride, and is getting the ball to skid. Is getting the ball to hurry on to the batsman. Very well bowled, getting some good extra movement.
Good seam presentation. That was an off-cut of ball with a good pace. Yes, may I thank the owners of Team Warriors, Aslam Bhai, Uday Bhai Jain, Krishna Bhai Jain, Amardeep Bhai, Kunal Bhai. सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. The owners of Team Warriors and also the owners of Team Chargers. Nicely played. The man at dippish point. Daksh is making batting look so easy, effortless. The score at the end of 12 overs, 92 for 1. That current run rate slightly less than 8 and over. I'm sure Daksh has something in the region of 185 for 190 to be posted on the board. Highest individual score देखते हैं किसका है. रोहन गज्जर का 154. वेदांत गाडिया second number पर 141 not out. Aniket Kawade 112 not out. Aryan Patni 110 not out. Kingshuk Rai at the number 5 spot, the captain of Gangsters, 104 not out. Aryan has got a chance to better his tally today. But this is not about individual glory. This is about taking your team into a winning position. And Parth, it will be once again to bowl to Daksh. And nicely bowled, slower through the air. A good pickup and throw, had a shot at the wickets, a direct hit. The ball ricocheting off the stumps towards the deep pitch square leg region. One extra run added. With that extra run, the score now on to 94. Yes, शिकंजा कसना होगा यहाँ पर टीम वॉरियर्स को. प्रेशर बनाए रखना होगा दोनों एंड से. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर यह मैच आ थमा है. सुपर शॉट. देखिए आज जिस तरह की बल्लेबाजी दक्ष ने की है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस तरह की एफर्टलेस बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिले. 100 runs up on the board with that. Ketal Sanya, sixer. Daksh on to 47 in a span of just 21 balls with the help of 3 sixes and 4 boundaries. Oh, that's a rare sight. The ball into the wicket keeper hand and the ball, the bat flying away out of the hands of Daksh. But looks like today he's simply from another planet. So effortless batting, dynamic batting, just what the doctor ordered for team Chargers. Indeed, leading from the front, playing a captain's innings in grand style here, making a huge statement. Indeed, champion players put their hand up in a crucial game. Better shot, 50 runs up on the board, a blazing half century. Yes, standing tall. Everybody applauding that half century. This half century could be one of the fastest in this tournament. Maybe we'll have to wait and watch. Of 23 balls, he's accomplished that half century with the help of 3 Ketal Sanya sixes and 5 dot shot boundaries. The strike rate, a mammoth 221.74.
देखते ही देखते 54 रन पर जा पहुंचे हैं दक्ष। लो फुल टॉस। आर्यन ने पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो दूसरा रन भागेंगे, बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। रन संख्या 106 रनों पर बड़ी तेजी से एक बहुत ही अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई टीम चार्जर्स। जबरदस्त इनसाइड आउट शॉट, 2 बाउंसेस इनटू द बाउंड्री रोप। इस वक्त पार्थ के पास किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं है। आक्रामक बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज में अपने इनिंग्स को अब आगे ले जाते हुए अपने बिल्कुल आक्रामक रंग को आज इस महत्वपूर्ण मंच पर, इस महत्वपूर्ण मैच में दर्शाया है दक्ष ने। चलिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, और ये जब हम पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर बताते हैं तो ये पूरे डायनामिक्स को कैलकुलेट करता है हमारा ऐप। Vedant Gadia 72.48 points in this tournament, is at the number 1 spot. Aryan Patni is now very fast closing in at the number 2 spot, 53.62. Yash Gadia at the number 3 spot, 51.91. ये हमारे 3 नायाब हीरे हैं। And of course not to forget अनिकेत। देखना है कि इस टूर्नामेंट के अंत में इन नायाब हीरो में से किसे कोहिनूर हीरा का खिताब प्राप्त होता है, एंड वही होगा हमारा मैन ऑफ द सीरीज। चलिए, आज इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू वॉच दक्ष इन सच गुड फॉर्म। ही इज ऑन अ सॉन्ग हियर। ही इज सिंपली मेकिंग द आर्ट ऑफ बैटिंग सो इजी। So this is what class is all about. When the going gets tough, the tough get going. यही खास बात होती है चैंपियन प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स की। बड़े प्लेयर्स वही होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में आकर योगदान करते हैं और बिल्कुल अपनी टीम को एक अनुकूल स्थिति में इस वक्त ले जाते हुए दक्ष। डेफिनेटली इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर टीम वॉरियर्स। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है इस वक्त, कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल, लेकिन कुछ हद तक पलटा भारी यहां पर टीम चार्जर्स का। एविन अपने स्पेल को मार्गस्थ रखते हुए फार एंड की तरफ से केवल एक ही रन से संतुष्ट होंगे। सीधे सीधा नो का कॉल दिया था आर्यन ने, किसी भी तरह दिलचस्पी नहीं जताई। नेल्सन फिगर्स 111 फॉर 1। एविन गेंदबाजी का भार संभाले हुए फार एंड की तरफ से स्ट्राइक पर बाहुबली प्लेयर दक्ष। डाउन द लेग साइड हम अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा करेंगे। वाइड का इशारा, 2 रन्स मिलेंगे वाइड के रूप में। ऐसे स्टेज पर हर एक रन काफी महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि 2 दिग्गज टीम्स आमने सामने है तो ऐसे वाइड रन्स शायद निर्णायक साबित हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड। अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है एविन ने। सुपर फील्डिंग पार्थ की, क्या बात है, जबरदस्त 3 रन्स रोके अपने टीम के लिए, क्या बात है। ये एफर्ट लगानी होगी, ये कमिटमेंट दर्शाना होगा, और दक्ष भी उन्हें उनका सराहना करते हुए। ये अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का प्रदर्शन, ब्रिलियंट फील्डिंग, ये कमिटमेंट होना चाहिए, क्या बात है। 10 on 10 एफर्ट। In the block hole, change in pace, a slowish Yorker
दिस इज ब्रिलियंट रनिंग। देखिए जैसे ही पहले रन के दरमियान जब क्रॉस हो रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, तब आर्यन ने बिल्कुल कन्वे किया दक्ष को कि यस दूसरा रन हम लेंगे, और अंत में बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। दे आर गोइंग अबाउट दिस बैटिंग सो क्लिनिकली। मैच सिचुएशन को और विकेट को भी बहुत ही अच्छी तरह से जज किया है विशेष रूप में दक्ष ने, और उसी अनुसार एक अच्छे ढांचे में, सकारात्मक ढांचे में अपनी गेम को संवार कर अपनी इस टीम को इस महत्वपूर्ण मैच में अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए दक्ष। आर्यन देखिए आज इज नॉट इज यूजुअल फ्लोइंग सेल्फ, लेकिन इज पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट। उसने अपने नेचुरल गेम को सैक्रिफाइस किया, इज गोइंग टू द ग्राइंड, विकेट पे बने रहे, स्ट्राइक को रोटेट किया है, जबरदस्त साथ निभाया है दक्ष का आर्यन ने। ये एक बेहतरीन सोच, क्या टेम्परामेंट है। अच्छी गेंदबाजी, और जैसे मैंने पहले कहा कि काफी ठीक ठाक गेंदबाजी की है अविन ने इस मैच में। मेरे ख्याल में पहली बार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं, लेकिन एक अच्छा परिचय देते हुए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 122 रन, केवल एक विकेट के नुकसान पर जबरदस्त नींव रखी है। जब तक दक्ष विकेट पे है बहुत ही बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। इस जोड़ी को तोड़ना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है, और ऐसे हालात में जो आपके चैंपियन गेंदबाज है, जो आपका नंबर 1 गेंदबाज है, उसे गेंदबाजी में उतारना बिल्कुल जरूरी है, और ये बिल्कुल जानता है धुन। और गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया गया है सौरभ लोहिया को। प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए, करंट रन रेट 172, 10 रनों की रन रेट से अगर खेलेंगे तो 181, और 12 रनों की रन रेट से खेलेंगे तो 193। क्योंकि सभी विकेट्स हाथ में है तो शायद दक्ष के जहन में 200 का लक्ष्य भी हो सकता है। ये 3 या 4 ओवर्स के बाद इस पर गौर फरमाएंगे। अब तक 180, 185 तक पहुंचना ये उनका मुख्य हेतु होगा। धुन के लिए एक कड़ी परीक्षा, इट्स इंडीड अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर फॉर द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग टीम, टीम वॉरियर्स धुन। Yes, both the teams have qualified, but they are vying for that crucial number 2 spot, which is very, very important. They got to get to that number 2 spot. जैसे ही आप नंबर 2 के स्पॉट पर आते हो, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन मिलती है, एक एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलता है अगर आप पहला क्वालिफायर हारते हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू गेट अ शॉट एट द ट्रॉफी फॉर अ सेकेंड टाइम, यू गेट अ चांस टू स्टे इन द टूर्नामेंट। सो बहुत ही जरूरी है कि आज ये दोनों में से जो टीम जीते वो नंबर 2 स्पॉट पे जाएगी। नो का इशारा, फ्री हिट। मिस कर गए, थोड़ा सा गलत शॉट, इनसाइड आउट अगर खेलते तो कवर्स के ऊपर से खेल सकते थे, और उन्हें पता है थोड़ा सा मिस कर गए। Yes, that should have been hit inside out over the extra cover region. Good bowling by Lohia. Yeah, he's been one of the most consistent new ball bowlers in this tournament. He's given a good account of himself, Saurabh.
The ball flying away off the leading edge. That will be a dot shot boundary to Aryan Patni. That partnership is worth 100 runs. Good going, guys. Cheers to both the batsmen. Aryan on to 45 of 42 balls. Just look at his strike rate. In spite of having slightly struggled today, this innings of 45 has come in good time and is now starting to gain his form back. He need not do anything foolish at this stage because Daksh is in such scintillating forms that all that Aryan needs to do at this point in time is to just keep rotating the strike, and is too good a batsman to even keep the strike rotating at the good balls as well. Yes, under pressure, yes, Saurabh. This is a beautiful batting wicket, and this will be a challenging proposition to be bowling to the batsman of this class. 130 for 1. Just look at that wristy shot. This is bread and butter stuff. And it's a no ball, quite an expensive over, taking some beating here with that dot shot boundary. Aryan moves on to 49. Gets a free hit. This is bonus. $135 for 1. That's a free hit. Aryan on 49. Going for that spanking shot, misses the line through with this shot a little early. The ball also keeping slightly low. A very accomplished new ball bowler, seam bowler, bowling to a man who is scripting a fairy tale in this tournament. Aryan Patni, he's in dream form. $50 runs up on the board for Aryan. Wow! ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्लान किया है कि मैं इस टूर्नामेंट में आउट ही नहीं होऊंगा. लास्ट 5 इनिंग्स में एक सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज, 4 मर्तबा नॉट आउट आए हैं और आज भी मौका है. पता नहीं आज भी यही सुनिश्चित करके आए कि मैं नॉट आउट रहूंगा. मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. सो जब अच्छा फॉर्म में तो कीप कैपिटलाइजिंग. ऑन द राइज थ्रू द लाइन. यस, जब आप इस तरह के फॉर्म में है तो आपको कैपिटलाइज करना है, बिकॉज प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बैड फॉर्म विल जस्ट बी राउंड द कॉर्नर. पता नहीं कभी बैड फॉर्म आपके मत्थे चढ़ जाए. सो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. कीप प्लेइंग, कीप accumulating those runs. Get those statistics under your belt. What a shot into the gap. Brilliant placement, dot shot boundary. And when I say that bad form can be round the corner for any player, Jur Singh is here, A division player, he knows it. Score at the end of 15 overs, 142 for 1. अब वो फाउंडेशन बिल्कुल स्थापित किया है. ये तो एक फूल जड़ी है, धमाका आना बाकी है.
बिल्कुल एक खतरनाक रवैया इख्तियार किए हुए दक्ष और आर्यन। आर्यन ने भी अपना हाफ सेंचुरी इज गॉट इट अंडर इज बेल्ट और अब फ्लरिशिंग क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा लग रहा है कि शायद एक आधे ओवर के बाद दे विल शिफ्ट गियर्स। यस, असलम भाई वार्म अप की तैयारी करते हुए। स्कॉट Jude bhai and yes, Jonty there to help him. Yeah, this is simply a fantastic approach. Daksh has really been the standout player. He's made batting look so easy. This is as if he's batting in the nets. Yeah, the hallmark of a champion player. He's looked a different batsman. Yes, so once again, the captain Dun bringing himself into the attack. He's got a job cut out for him, not just as a bowler, but as a captain and as a batsman as well. Indeed, this is a test for Team Warriors. They are such a fabulous team, and I'm sure they will give it their best shot to win this match. They are a champion team, no doubt about it. Two evenly balanced teams. Yes, definitely in the driver's seat at this state team charges, but they've got this capacity to bounce back, make a match out of this one, and also try and win this one, Team Warriors. He always does bowl a flatter trajectory, Dun. Yes, so with that single, the score on to 143. We enter the 16th over, which has just about started. The man on strike, the batting dynamo, Daksh. A very tall player. That ball didn't turn at all. It just went with the arm away from the batsman, keeping slightly low. Well bowled by Dun. Shot inland, dispatched with disdain. Stand and deliver stuff over the mid-wicket fence into the stands. That's 88 meter 6 K Talsania construction 6. So with that 6, the score now in this 16th over moves on to 149. गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, because ये बिल्कुल एक मर्डरस मूड में है. एक थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो प्रहार करेंगे. बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में आप खेल रहे. करीबन हर गेंद पर आप प्रहार करेंगे. अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी. ये बिल्कुल एक स्टैंड आउट इनिंग्स है पूरे टूर्नामेंट की. क्लास अपार्ट. अच्छी वापसी करते हुए धुन. धुन भी एक चैंपियन प्लेयर है. जबरदस्त ऑलराउंडर है धुन. काफी ज्यादा वाइड. एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा वाइड के रूप में. उस एक्स्ट्रा रन के साथ 150 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए जबरदस्त शुरुआत. क्या अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, विशेष रूप में दक्ष ने. और दक्ष ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, प्रेशर किसी भी वक्त आर्यन पर नहीं था. उस महत्वपूर्ण विकेट की खोज में धुन. अच्छी गेंद और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग. ओवर की समाप्ति 16 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 151 रन, एक विकेट के नुकसान पर. बहुत ही जरूरी है कि 190 के अंदर इस इनिंग्स को समाप्त करे टीम वॉरियर्स. अगर 200 का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर नजर आता है तो एक साइकोलॉजिकल एज प्राप्त होगी. असलम भाई 190 और 200 में काफी अंतर है. 199 और 200 में भी बहुत फर्क है. 199 आप एक बार सोचोगे कि चेस होगा, लेकिन जैसे 200 टच होता है तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर मन में बनता है, जहन में आता है. प्रोजेक्टेड स्कोर की तरफ देखते, करंट रन रेट से बल्लेबाजी करेंगे तो 188, 10 के रन रेट से बल्लेबाजी करेंगे तो 191.
12 रनों की रन रेट के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो 199. Yes, looks like it will be. Is it Evan to continue? Yeah. That was bowled slower through the air. Daksh on to 76 of just 36 balls. Can he get to that three-figure mark? That century has eluded him. Well bowled. That was a leg cutter. Absolutely on the money. Brilliant bowling by Evan. Right from the word go, Daksh has played at a strike rate of 200 in this innings, and to maintain it to the stage wherein you reach an individual score of 76 really takes some taking. Mammoth effort. Brilliant. Yes, still watchful, treating the bowling on merit. The big question is, can Daksh get to that triple figure mark? If he stays at the wicket till the very end, easily it will be a century to the credit of Daksh. Going for that big shot. This is such a good over by Evan. That change in ends doing the trick for Evan. मैंने पहले ही बताया कि ठीक ठाक गेंदबाजी की है आज इस टूर्नामेंट में. पहली बार गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं और एक अच्छा परिचय देते हुए. ये आसान नहीं है. दो दिग्गज बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, लेकिन अपने लाइन और लेंथ में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं. सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं. एक बहुत ही अच्छी बात है. और टीम वॉरियर्स को अपने निर्धारित 100 मिनटों में 20 ओवर्स करने हैं. 100 मिनटों में, ये प्लीज ध्यान में रखें आप. कम से कम आपका आखिरी ओवर 100 मिनट में शुरू होना अनिवार्य है. चेंज इन पेस. यस, वो विकेट मिला है. किसी ने सोचा था क्या आर्यन आउट होगा इस टूर्नामेंट में? पांचवें इनिंग्स में आउट हो रहे. 4 इनिंग्स के बाद, यानी कि 4 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी लगाने के बाद आउट होते हुए आर्यन. व्हाट अ प्लेयर आर्यन. वेल प्लेड बडी. कीप गोइंग. Indeed, the stalwart at the Goregaon Sports Club, one of the finest young talent in this part of Mumbai, not just Goregaon Sports Club, in this part of Mumbai, one of the finest talents. Yes, Karan Bhai Singh Walia applauding him. He knows that a star is born at the Goregaon Sports Club in the form of Aryan. He was struggling today, but he still put a price on his wicket. Yeah, can we have... I am Nishil Mittal. I am a right-handed batsman and a right-handed bowler. Yes, Nishil, one more key ingredients in this wonderful dish of team Chargers. A naturally flamboyant player, a very handy man to have in your team, a captain's delight. He might not be the superstar player, but indeed he's got the potential to be a star player. And it is indeed because of players like Nishil, we can give that tag of superstars to players like Daksh, Aniket and Aryan. Still very watchful. He knows that he's bowling well, so does not want to take unnecessary risk. That was the last ball of his over. So quite the right thinking. The score at the end of 17 overs, ladies and gentlemen, it is 153 for 2. That was very well bowled by Evan in a pressure situation. That will
be a huge relief for doing that tight over from Evan. "39 balls and 78 runs to Daksh. The strike run rate 200. My God. That partnership, courtesy the wicket of Aryan, got broken after 122 runs. What a partnership. Very short, but very flat as well. Not able to get that elevation that he required because that ball stayed low. In the end, happy to just smack it away towards the deepish mid-on region. A single added, and the new man, Nishil, will take guard against Zun. And yes, I mean, the mool mantra for Team Warriors at this stage, in this situation, would they would really want Daksh to stay off strike on most times. And exactly the opposite will be wished by Team Chargers, looking for that second run. Smart running between the wickets, and piece of misfielding, and that's a dot shot boundary to Nishil. The captain not happy at all. It's been some sloppy work in the field. At least on 4 occasions they have faulted where there should have been just 1 run. They've conceded 4 extra boundaries. Slightly the pressure getting to them. Generally, they are such a good fielding team, Warriors. Slightly sloppy, not up to the mark in this tight game. Remains to be seen whether it will be. We'll have to wait for the umpire's signal. Leg by being given. Nicely struck, but will find the man in the deep. Could not pick his gap there, Daksh. Daksh on to 80 runs of 41 balls with the help of 7 boundaries and 4 sixes. Nishil, and Nishil will play his natural game. Absolutely. He's a flamboyant player. Plays with that extra flair. Yes, balls to go. 2 balls to go, sir. 2 balls to come in this 18th over. A total of 14 balls to come in this innings. That was in his slot. It was in his reach. It was in his zone. But well bowled. Dhun is bowling tight. Very well left. There was good thinking. Good wristy work. We'll look for that second, but a clean pickup there. Clean pickup. Even if we would have to fumble slightly, both these batsmen would have gone for that extra run score at the end of 18 overs. 164 for 2. Yes, in those last 2 overs, they have staged a comeback of sorts here, Team Warriors. They've been tight. They were looking on cruise mode, and at one stage looked like they would easily get to 195, 200, but those 2 tight overs have brought Team Warriors back in the match. They've staged a mini comeback. I would call it a mini comeback, and I wouldn't call it a full comeback. Yes, and Avin to continue from the commentary box, and will be bowling the penultimate over for the team and the last of his spell. Yeah, he'll have to be right on the money in this last over. He'll have to be in good form. Good smart bowler. He's a thinking bowler. In the block hole, playing with soft hands. That was a leg cutter. More than happy with a single. Daksh wanting to keep the strike to himself. Quite the right
thinking the right intent. What will Daksh do at this stage? The bone of contention is whether he gets to that half century more than the thought whether team Chargers can get to the double century. The more interesting piece is whether Daksh can get to that century. Up is played into the gap. Nicely placed. One more dot shot boundary to his credit. Takes the score to 169. That was too easy. Nobody there. Not a bad piece of fielding. A good slower delivery, but he picked his gap so well. Daksh on to 84 of 42 balls. Once again, that strike rate exactly 200. He's not moving away from 200. Nicely run by Nishil. Much of that credit needs to be given to Nishil. He was running at the danger end, and it is imperative that Daksh is given most of the strike. Good thought. Never mind if Nishil gets out at the non-striker's end. Inside out, that could be a catch. A missed opportunity there. Not just a missed catch, but also one more run added. This could be a penalty of 18 to 20 runs with Daksh in this kind of a form. Daksh on to 88 of 44 balls. A total of 8 balls to come in this innings. 8 balls to come. 173 for 2. Two champion teams against each other. Still in no hurry. Picking up that single. One more ball to come. 174 for 2. What an innings this has been from Daksh. It's been a masterclass from the batting dynamo. Such a tall player. Living up to his reputation of being one of the best players. A soft dismissal. Will have to take that long walk back to the pavilion. Nevin picking up a wicket off the last ball of his spell. It's not a wicket, it's bum. No, no, no. Score at the end of 19 overs, 174 for 2. Not taking that run because Daksh needs to keep the strike. The last 6 balls to come. This has been a good comeback in the last 3 overs by Team Warriors. And this last over, they have to be tight because at one stage, maybe that 195-200 looked a possibility, and now it's looking very difficult. All credit to Team Warriors for having bowled so tight in the dying stages of this innings. 174 for 2. Daksh on to 89 of 45 balls. 6 balls to go.
Yes, able to put bat to ball, and that's a dot shot boundary of the inner edge. A boundary to the first ball takes the score to 178, and Daksh on to 93. If he gets to that century, that would really be a magical moment. He deserves a century, doesn't he? He's played so well. Brilliant batting. He's batted like a champion, a towering player. Yes, the ball ricocheting into the stumps of the hand of Parth. Good effort in his follow through. 4 balls to come now. And it is... yeah, we'll check whether the delivery is fair. Here we go. Yes, a fair delivery. Perfect. Yes, Paraksha. Yes, 4 balls to go, and Daksh the man on strike. 178 for 3 at this stage. Parth bowling the final over from the far end. Daksh on 93. Handsomely struck. Dot shot boundary. Fortune favoring the Brave. With that boundary, the score on to 182, and Daksh within just striking distance of a blazing century. 97 for Daksh with the help of 10 boundaries and 4 sixes. 3 balls to come. 182 for 3. It's deft touch. The ball will race away, and that will be a blazing 100. Goodness me, what an innings. One of the best innings that one could have expected to see in this tournament, and there he goes, celebrating, and why not? What an innings, each and everyone on the ground giving him a standing ovation. Goodness me, what a moment and what a stage is chosen to make his potential count here. What an innings, man. Superb. 186. .186. 2 balls to come. Cut away. A man in the deep. Good piece of fielding, and yes, they will get through for that. A second run easily taken. 188. The final ball to come in this innings of Team Chargers after having been put into bat by Team Warriors. They have put a fantastic tally on the board. Courtesy Daksh, a century to his name. Yes, we'll just wait for the... Yes, it's been given out. What a splendid catch in the deep by the captain, Doon. A flat catch. The score for Team Chargers is 188 for 3 at the end of their quota of 20 overs. 189 runs to win this match. Formidable ask, but not an impossible one. This will be a match that
has all the makings of going right down to the wire. That innings from Daksh will be applauded by one and all. What a stage and occasion is chosen to prove his worth. And he made batting look so easy. He's a champion batsman. Just look at him. That body language. Karan Bhai leading the way to cheer him. Both the Karan Bhai and Vivek Bhai Narsaria and the whole camp. Wow. Absolutely a very happy man. Yes, may I welcome the owner of Team Gladiators and such a great cricket enthusiast and a very smart man, Nikhil Bhai. Yes, I am with Nikhil Bhai Patel, the owner of Team Gladiators. Nikhil Bhai, such a fantastic innings, and the way they really set the foundation and then capitalized on in two champion players coming good, Aryan Patni and Daksh. That was, for me, one of the best innings in this tournament. So effortless. Your first thoughts on the batting onslaught of Daksh and Aryan? Actually, I was looking at a score at 200, but Chargers bowled two beautiful overs in between by Avin, and he restricted them. And they played very good cricket. Amazing innings by Daksh. I especially was traveling all the way from Andheri, and I said I have to go and see the match. And it was surprising to see Aryan getting out, because Aryan has played all innings which he was not out. So it was a real feast to see this. Their score to 192, 189. It will be a good innings. It was an amazing innings to see. Nikhil Bhai, you rightly said that 200 was on the cards, but they bowled two very tight overs, and now because they are quite below 200, maybe in with a chance, but the key player, the champion player Aniket and
somebody amongst the top three will have to come up with an innings of 65, 70 plus. Today, I expect Aslam Bhai to play. He's come, he's done his stretching and all, and he has to support Aniket, Dun, and Gabbar. So let's see. They have a very good batting lineup too, and if they keep up the chase, it would be very interesting to see again. एंड निखिल भाई कल से हम हमारे क्वालिफायर्स को शुरू कर रहे हैं कि बिल्कुल बिजनेस एंड और आज का ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद अगर आप सेकंड स्पॉट पे नहीं आते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है सेकंड स्पॉट पे आते हो लाइफलाइन मिलेगी एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा तो उसे देखते हुए ये बहुत ही प्रेशर गेम इंपॉर्टेंट मैच है Do you mean to say both of them have a chance to be on the second spot? Acha, both the teams. Yeah, so obviously Chargers are going to play their hearts out. Let's see how they place their batting and how intelligently they bat. In fact, they have a good bowling line with again Aryan and Daksh bowling across. And let's see, it's going to be a last over match, I would feel that way. If they fight it out, it will be a very interesting match to see. Thank you. And yes, indeed, looks like this match will go right down to the wire. Could be a cliffhanger of a match. And thank you so much, Nikhil Bhai. You've always been a great support, not just for your team, but overall for the events at Goregaon Sports Club. Thank you so much. And yes, once again, we will meet within a short time. The sets target for team Warriors to win this match is 189. Not a mountain to climb, but definitely a challenging ask, a very fighting target here set for Team Warriors. We meet in the next 7-8 minutes. Thank you. Yes, over to Mayura and Kosha. Because my pretty partner has come today, I have come back with questions and gifts only because of Kosha. Thank you so much. Hope you are having a great time. Indeed, it was a fantastic innings by Chargers. Congratulations, Daksh Agarwal. Incredible performance, of course. So we are here with the question and answers over here as we are only left with the last 4 days of this tournament. So we're asking more and more questions. More and more questions and gifts. giving out more and more gifts so that people enjoy. So we are here with a lovely lady, Balvinder Kaur ji. Yeah, tell me. Tell us about yourself. How come you're here? Why you here? How are you आप किसको feeling? support कर रहे हो? किसे support My कर रहे हो? son-in-law, Gurmukh Singh, I'm supporting him. That's Warriors. Yeah, of course. So क्या लगता है अभी क्या होगा next innings में? He'll win, definitely. That's the spirit. This is माँ का आशीर्वाद. That's the spirit. Note की जाए ये बात माँ का आशीर्वाद है ये. Definitely he will win. So Auntie Kosha is going to ask you a question. Yeah, okay. And if you answer it right, then you take a gift home. Think आराम से. So यहाँ अभी जो anybody can answer. anybody Anybody from your can answer. Anybody can prompt. So everything is allowed over prompt here. You can prompt also. So अभी यहाँ पे जो दो टीम है वहाँ पे ऐसे 3 father and son duo है जो खेल रहे हैं यहाँ पे. So who are they? एक तो मुझे पता है आर्यन पटनी. चलो तो आप बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइक आर्यन पटनी. Father's name? Rajesh. Okay, second. But she's telling me. Okay, and 3 है आप 2 भी बोल दोगे तो भी enough है. Okay. Parag and Parth. Parag and Parth. Parag and Parth, yes. Okay. 2 हो गया. लेकिन if you know then nothing like it. Amit and Shreya Desai. Oh, that's the correct answer. All thanks Thank to you. uncle who has been prompting Who's been and helping who out. is helping them. Yeah, So yeah. congratulations, Prompting. auntie. Yeah, thank you. We will just get the Thank gift. you. Yeah, We'll yeah, want- sure. We'll Thank get you. you the Thank you gift. so much. Yeah. Thank All you, the Mayra. best for your team as well. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. May the best team win. Thank you. Thank you. But my son-in-law has to win. Yeah. Gurmukh Singh. Yes, he will win. You have to score now. Yeah, We have seen all through the tournaments the
the young children, the game is of them. They have played very good cricket, and they have shown the talent. And above that, it's all family members playing over here. And I think we should thank to the management company, our management, who had created such a good atmosphere where we can get the chance to show your talent. I really give them three cheers so that they can do more and more activities for our Hip, club. hip. Yeah. Hooray! Hip, hip. Hooray! Hip, hip. Hooray! Very well said, Uncle. Thank you so much. Thank you so much for the encouragement. Thank you. May the best team win. Over to the commentary box. Okay, wait. We'll first give the gift, then commentary box. Thank you so much. Thank you. Thank you. आपका ये Thank you, Tosha. Thank you, Uncle. Thank you. हाँ बोलो. Clean and pure air is so essential for our healthy life. But you never know when things just might not be right. It is always better to be prepared to protect yourself from any such exterior attacks. Burge introduces the all-new Iron Dome, your protector. Let's understand the theory behind the Iron Dome. The generator produces millions of positively charged and negatively charged ions, which are fired out from the Iron Dome. These ions are scattered in the air and are surrounded by water molecules. The positively charged and negatively charged ions instantly bond with the surface of microorganisms, causing a chemical reaction resulting in the creation of highly reactive OH groups called hydroxyl radicals. The hydroxyl radical takes up a hydrogen molecule from the cell spike protein or cell wall of an airborne microorganism, be it a virus, fungi or bacteria. The Iron Dome is ozone-free, self-contained and needs no refilling and does not contain any filter that may require replacement. Burge brings to you the Iron Dome, a unique air purification technology, a protector of your family and your loved ones. Burge, for a healthier and better lifestyle.
Yes, Pramod Bhai Kashyap about to display that brand new white ball which will be snatched away by Kiran Purandare. Yeah, the second half just about getting started in the next couple of minutes. The target for Team Warriors after having decided to bowl first 189 to win the match. The two umpires, a big thank you to Kiran Purandare and Vishwas Rao sir. Yes, the team charges in a huddle just to making sure that the last key message is sent across. Very accomplished captain, such a smart one. He really likes to take the load of the team on his shoulders. Yes, not just the new ball for Anurag also will come in as the opening batsman. So a key role being assigned to Anurag. What a wonderful innings he played the other day. This batting pair is really the key. Can we have the players profile on screen, guys? Aniket's first. My name is Aniket Kavde. I am a right-handed batsman and a right-arm fast bowler. My favorite shot is square cut. Anurag. My name is Anurag Bhimrajka. I am a right-hand batsman and a right-arm spinner. Yes, the man on strike, Aniket. Yes, can we have that side screen and everything in order so that he can get his concentration going? Straight away, Daksh to open the bowling attack from the commentary box, and two very accomplished batsmen to open the innings for Team Warriors. Aniket alongside Aryan Patni, he's the only batsman in this tournament to have an average of more than 100. Can we have the countdown, guys? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play! Yes, the stylish man. Into the gap, well timed. Aniket is too good to miss out on those loose deliveries. That was a loosener from Daksh and taken a proper toll off. The first dot shot boundary straight away off the mark with a blazing boundary. Aniket Kaude. Yeah, this is a positive start here for Baba. Smartly taken second run. A naturally attacking player, a flamboyant player. Driven towards the man stationed in the point region. A good start here for Aniket and Team Warriors. 7 runs already on board for the first time in this match. Now Anurag on strike facing Daksh. 189 to win. Required run rate 9.33. Played it back to the bowler. Still early days, lots of cricket left to be played in this match. 189 of challenging ask, but definitely not an impossible one.
especially in a scenario if both these batsmen get going. Very well bowled, slower through the air, inviting Aniket to play the big shot. Aniket really up to it, playing it with soft hands. Score at the end of the first over, 8 runs. A reasonably good start here for Team Warriors, 189 to win. This has been a great tournament for Aniket, who alongside Aryan is the only batsman to play with an average of 100 plus. इस बीच YouTube और Facebook के हम हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये राउंड रॉबिन लीग मैच का ये फॉर्मेट का आखिरी मैच है और कल से फर्स्ट क्वालिफायर, एलिमिनेटर, सेकंड क्वालिफायर और ग्रैंड फिनाले। Just short of the man at short mid wicket. बहुत ही अच्छी तरह से काफी जल्द पोजीशन में आए थे उस पुल शॉट को खेलने के लिए। ये देखते ही और एक प्लेयर को अब लेग साइड पे तैनात किया गया है, राजेश पटनी एट द एज ऑफ द सर्कल। Yes, nicely collected down the leg side, was a wide one, a good collection. Getting some good carry. He really presents such a good seam, and his stock delivery is the one that comes into the batsman. Yeah, this is a huge responsibility on Sachet Agarwal, one of the premier bowlers. This is a very important match here for Anurag. He is a naturally attacking player. He likes to play an aggressive brand of cricket. Yeah, Aniket will not ask him to not play his natural game. He'll just ask him not to manufacture those shots. The partnership is really the key here. What a player this man is, Anurag. What a player, blockbuster player. Yes, we'll wait and watch. Yes, for the umpires. Yes, penalty. So, how many runs added? 5 runs added. 5 runs. Because the ball hit the helmet. So, 5 plus 1. Yes, परमिंदर भामरा जी का हम तहे दिल से स्वागत करते। गुड इवनिंग सर। The score is on to 15. 15 for no loss. A good start here. 2 more balls to come in this over from Sachet. Yes, one of the premier new ball bowlers in this tournament. A nice and easy run up. His natural action makes the ball come into the batsman. Nice and easy run up.
Very well played through the line on the up. And that will be a dot shot boundary. Aniket once again starting from where you left the other day. This is huge pressure on Aniket, but he's used to be in this kind of a situation. The champion player that he is, he will not let this pressure affect him too much. Yes, this game of cricket, just like any other sport, is based on 4 pillars. The first one is your technique, your talent, your skills. The second one, your nutrition, your diet. The third one is your mental makeup. And the other one is your stamina, endurance. The ball running away. Vivek Nasaria in a hot pursuit. We'll have to wait and watch. The ball had enough fit on it, enough fuel on it to go past the boundary. Consecutive dot shot boundary. With that dot shot boundary, the score now on to 23 at the end of 2 overs. Off to a good start here. This is just the kind of start that Doon had wanted. The whole camp of Team Warriors was hoping for this kind of a start, and if this both these batsmen can stay unbeaten at the wicket for the next 3 overs, we have a match on our hands, guys. This is going to be close. Daksh bowling to Anurag. Well bowled, both the batsmen and the wicket keeper beaten holes and welcome runs. Just what the doctor ordered for Team Warriors. 4 precious runs added. With those 4 runs, the score on to 27. Hardly anything Daksh could have done about it. Was brilliantly bowled. Unfortunately, 4 extras in the column. Yeah, these are welcome runs. Each and every run absolutely vital in this kind of a key game. Right up there in the block hole. A good comeback delivery by Daksh. And nicely cut away. Happy in the deep. (28). Aniket on strike facing Daksh. And nicely turned away around the corner. Good footwork by Vivek Nasaria. Not able to bend, but smart enough to field it over the foot. Yes, he's a 45 plus player, so never mind. Yesterday he bowled a fairy tale spell. Grabbed 4 wickets yesterday. Just what the doctor ordered, getting into the thick of things, joining the party here. Anurag, that was deft touch. Nazakat se khela tha, just bringing his bat down to the right moment, playing it soft hands. With that boundary, the score on to 33. This is such a good start here. Brilliant start. On to 33 before the 3rd over is finished. We have 33 on board. No, says Anurag. Just in the nick of time, enabling Aniket to come back. Score at the end of 3 overs is 33 runs. The current run rate 11 and over. And the required run rate coming down slightly to 9.18. All wickets in hand.
दिस इज अ टशन मैच, बिल्कुल एक जंग है। बिल्कुल उजागर होकर गेंदबाजी करनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। दूसरी तरफ ये दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल रंगत में आकर आज अपने बेस्ट क्रिकेट का प्रदर्शन करना होगा। साचेत अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे। अनिकेत स्ट्राइक पर। चले उस चौके के साथ अनिकेत अब उस ऑरेंज कैप के हकदार हो जाते हैं। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस, क्या चैंपियन प्लेयर है, व्हाट अ प्लेयर। जब जब भी बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं तो ये बिल्कुल आदत हो चुकी है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की, अनिकेत के बल्ले से एक बड़ी इनिंग्स की प्रतीक्षा करते हैं। और जब मैं बड़ी इनिंग्स कहता हूं तो अब 30-40 की इनिंग्स ने 70-80 रनों की इनिंग्स की प्रतीक्षा करते हर वक्त जब कभी अनिकेत बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है। सो क्रूअल, सच अ हार्श थिंग, बट स्टिल अनिकेत takes everything into stride and goes about his business so coolly, so focused. He's very strong in the mind, just the way Daksh is so strong. His mental makeup is absolutely fantastic because he's got so much of experience behind him. He does read the match situation so well. He picks up the length of the delivery so quick, and the way he just gets his game going as per the match situation is an absolute delight to watch. A champion player, he holds the key here, Aniket, in this match. Yes, the 45 plus players, slightly difficult for them to bend down, but smart enough to use their feet. Nimble footwork from Happy. With that single, the score now on to 38. We are into the fourth over. This is a fabulous start. The foundation is being laid. एक अच्छी नींव रखते हुए थोड़ा सा जल्दी खेल लिया था, चकमा दिया था, लीडिंग एज लेकर गेंद नो मैन्स लैंड में गिरती हुई भाग्यशाली रहे अनुराग। अनुराग भी क्या बेहतरीन प्लेयर, और जैसे ही टूर्नामेंट लीग स्टेज के में समाप्त होकर अब नॉकआउट स्टेजेस की तरफ बढ़ती हुई अनुराग बिल्कुल रंगत में आते हुए और एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, अच्छा परिचय देते हुए, अपने हुनर का, अपने टैलेंट का जबरदस्त प्रदर्शन देते हुए अनुराग। स्ट्राइक पर अनिकेत। अच्छी गेंद पंच किया, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग आर्यन की। यस, देखिए इस मेंटल मेकअप की तरफ देखिए अनिकेत और अनुराग, जो अर्ली बटरफ्लाई स्टमक में थे, जो थोड़े से नर्वस मोमेंट्स थे, वो अब सेटल हो चुकी है। अच्छी टाइमिंग, वहां पर सीधे हैप्पी के हाथों में, थोड़ा सा फंबल लेकिन कोई नुकसान नहीं, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस अच्छी शुरुआत के बदौलत जो थोड़ा सा प्रेशर माहौल था ड्रेसिंग रूम में, वो भी अब सेटल होता हुआ। ये अच्छी बात है कि जैसे नर्वस मोमेंट्स हम साइड में रखेंगे तो हमारा नेचुरल गेम खेलने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की तरफ, काफी तेजी से और काफी देरी से आई, बिल्कुल सही वक्त पर अपने बल्ले को नीचे लाए अनिकेत। थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थे लेकिन वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन ने बिल्कुल उनको बचाया। वहां पर एक रन मिला, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 42 रन बिना कोई नुकसान के। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं ऑरेंज कैप होल्डर को, अनिकेत कावड़े।
7 matches, 388 runs, highest of 112, not just 338, still going strong. What a moment here for Aniket. Yes, indeed. Always gives us the goosebumps whenever he comes in to bat in a critical match. Mentally very strong, one of the strongest player as far as the mental makeup is concerned. Players like Aniket, Daksh, Yash Gadia, they are mentally very, very strong. Even Kingshuk, Rohan Gajjar, all mentally strong players, and the very experienced. Happy this will be a test for him. Watching Aniket slightly walking down the wicket, he really pitched it short, shortened the length of his delivery, well bowled. Anurag. Very wide. Yes, crowds coming in huge numbers to watch this crucial encounter. A big, big thank you to all the supporters of both the camps and all the cricket enthusiasts for making their presence felt. Thank you so much. Leading edge, fortunately in no man's land, living dangerously, trying to manufacture a shot that really wasn't there. बट ये इनकी फितरत में है, आक्रामक खेलना ये उनका नेचुरल गेम है, उनकी फितरत है ये. लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म में है तो बहुत ही जरूरी है कि अच्छा साथ निभाए. ये अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए हैप्पी ज्यादा तेज रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा पेस नहीं देना चाहते बल्लेबाज को कि बल्लेबाज उनकी पेस की बदौलत गेंद को वर्क अराउंड करे. चलिए थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर ने इशारा किया है. In the commentary box, the third umpire in action. We'll watch it frame by frame. We will go slow. We'll try and give you the right decision. Chaliye. Anurag on strike. Pramod Bhai is there to watch it. Not out, says the third umpire, but that was so close, just home in the nick of time. He had some part of the foot behind the line, and that is what really saved him. Living dangerously, Anurag. Flirting with danger. शिकंजा कसा है यहां पर हैप्पी ने. मिस कर गए. 9 में से 10 बार उस कैच को ले लेते, लेकिन वो इंस्टेंस वो था कि कैच छूटा. 9 out of 10 times he would have taken it. As I mentioned, he's flirting with danger. He needs to talk to himself. He needs to reorient. He needs to gather his focus back because he really holds the key, Anurag, here. This is good bowling. Miserly as ever, smart bowling, bringing all his experience into play. Yes, well bowled, sort of comeback.
He will have a crucial role to play. Yes, Happy is indeed an integral part of the thought process of Daksh as far as the bowling lineup is concerned, and he has a huge role to play and indeed a good start. And if somebody like Happy gets to bowl those 4 overs, the options are much open then for Daksh. Yes, the dream boy now coming on to bowl, Aryan Patni. Indeed the dream boy in this tournament, Aryan. 90 balls and 143 runs to win this one. The required run rate 9.53. Indeed a challenging ask, but still into the match, all wickets in hand. This is such a good start to the quest of those 189. Yes, Aniket playing the last match in this round robin league format, and he has the orange cap donning so smartly on his head, deservingly on the head of Aniket. He deserves it. A good leave. He watched that one so closely. Working it round the corner to Vivek Bhai. Vivek Bhai had a dream spell yesterday. Might be Daksh could hand over the ball to Vivek Bhai. You never know. He'll have to be ready for it. Maybe that moment could arrive in this tournament. We'll have to wait and watch. Till the time his first 5 bowlers do a good job. But still you never know. That ball kicked from a length. Always does from that spot. Since the last 5 days, the ball is really kicking from that spot. Maybe a danger spot there. Daksh going slightly back towards the very fine third man region. Fine short third man region. What a shot! Anurag at last able to put back to ball. That will really make him feel so good. He holds the key. This is all about self-belief. It's all in the mind. As far as talent is concerned, it's absolutely on an even keel. Your application, your focus, your grit, your determination are the keywords. Grit and determination, self-confidence, self-belief, the keywords here. 50 runs up on the board with that 6. So once again the ball running away. Vivek Narsaria in chase, a futile chase. The ball wins the race. That Ketal Sania 6 followed by a smartly hit dot shot boundary. Wow, what a start here, man. This is fabulous batting. This is such a good counter attack. This is a counter attack in the true meaning of those words. Counter attack at its best. And proper cricketing shots, not just a lusty onslaught. This is clinical. Well struck into the gap. We'll have to wait and watch. A man in pursuit. The ball wins the race. This is Anurag at its best. He's coming to do the pinch hitting. And he is now growing in stature, growing in confidence. Anurag is taking the attack to the cleaners. Aryan Patni taking a beating at the hands of the champion batsman Anurag. This is good cricket. What a contest here. Well played. Yes, self-belief, self-confidence, grit, determination. Going through, prepared to go through that grind is the key. You have to be prepared to go through the grind. And if you stay at the wicket, see initially in the first off,
He was struggling, Aryan, but he put a price on his wicket. He stayed at the wicket and ultimately came up with a half century. So you got to stay at the wicket, even if it's a T20 game. Runs will keep coming in automatically, even in a T20 game. The key is to stay at the wicket. Once again, happy to continue with his spell. He has a big job, and now that Aryan has gone for quite a few runs in his first over, Happy will once again have the pressure on himself to bowl a tight over once again. Score at the end of 6 overs, 62 for no loss. A handsome start, just the kind of start that Aslam Bhai had wanted, Doon had wanted, the whole camp had wanted. Just about the right start. Now this gives a big opportunity here to Team Warriors to rise from the ashes. This is a big opportunity. Now this good start has to be converted into a grand innings now. This is a good start. Team Warriors need to capitalize. Still lots of cricket left to be played in this match. The match now evenly poised. Yes, definitely even Stevens. Equal chance for both the teams to win this one. Yes, the calculators are really going to come into play. What a shot on the rise through the line, intentional, but straight to the man in the deep. Yes, Happy will be more than happy to give that single away, but yes, he's got to one more aggressive batsman to take care of. Anurag is in a very aggressive mood now. Anurag has started to flourish towards the end of the league stages, and this is good news for Team Warriors. चलिए अब पूरा दारोमदार बाबा और गब्बर पर है. बेहतरीन शुरुआत दी है. ड्रेसिंग रूम में भी अब काफी सकारात्मक माहौल, एक नवचेतना, अच्छी ऊर्जा. थोड़े से प्रेशर में अब टीम चार्जर्स. कितनी सटीक तरीके से अनिकेत बल्लेबाजी करता है. ज्यादा एक्सप्रेसिव प्लेयर नहीं है, जिस तरह से दक्ष भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है. अनिकेत also goes about his business in such a cool manner. He's indeed Mr. Cool. He's taking his chances. He's living slightly dangerously, but wouldn't blame him because he's a naturally attacking player. So wouldn't blame him. दो फुल टॉस, अच्छी टाइमिंग. अगर अनुराग विकेट पे डटे रहे तो बिल्कुल उनके बल्ले से रनों का सैलाब उभरेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है. जलजला जरूर बहेगा. अच्छा शॉट, गैप भी बेहतरीन तरीके से पिक किया. डॉट शॉट बाउंड्री उस चौके के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 71 रन बिना कोई नुकसान के. All wickets in hand, 71 already on board. This match is even Stevens. Maybe Team Warriors are starting to take a grip on this match. Slightly in a spot of bother. उस पहले विकेट की खोज में यहां पर टीम चार्जर्स. आर्यन पटनी फिर से एक बार अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे और उनके पिताश्री राजेश थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए, और मेरे ख्याल में अब गेंदबाजी में तब्दीली. राजेश पटनी अब आएंगे. रोका है आर्यन को और गेंद थमाई है राजेश को. गत 2 मैचेस में बहुत ही सटीक गेंदबाजी की है
राजेश ने एक बहुत ही अनुभवी प्लेयर है 45 प्लस के बिल्कुल एक आइकॉन प्लेयर है मैच विनर है क्योंकि अब सभी विकेट्स हाथ में है ये एक परीक्षा होगी दक्ष के कप्तानी के लिए he'll have to keep that thinking cap on at most times. Now this is going to be really close, maybe more close than what we would have expected this match to be. This will all boil down to the last overs, no doubt about it. Nicely played. That wasn't a bad delivery. Standing tall on his feet there, punching it away, picking up the gap so well. Dot shot boundary to the blade of Aniket. Aniket growing in stature, growing in confidence, once again proving out to be the danger man. Match after match, innings after innings, Aniket, the champion batsman that he is delivering in all the matches. Wow, what a player, so strong mentally. With that single, Aniket on to 34 balls of just 34 runs of 19 balls. What a start. Just the way Daksh had a great start. The same way, Aniket is off the blocks in quick time. And he's played those proper cricketing shots. One more very good statistic thrown at me by my digital scorer. Aniket has scored 400 runs in this tournament. Aniket, and is still unbeaten. Fetching that ball from outside the off stump, dragging it towards the dippish mid-wicket region. 1 run added with that single, the score in this 8th over on to 78. The current run rate is more than 10 and that required run rate has come down to less than 9. Walking into that shot, taking a few small steps ahead to get to the pitch of the delivery, smothering whatever spin that was on offer from Rajesh Patni. With that single, the score now on to 79. The run rate 10.3 and over. Fabulous batting. What a counter attack. Well played, happy in pursuit, will not be able to get anywhere near the ball. That was a premeditated shot even before the ball left the hands of Rajesh. Anurag had made up his mind to play that kind of a shot. That shot coming off, dot shot boundary, 83. One more ball to come in this 8th over. This is a fabulous start. This is indeed a great start. देखना है कि आज 20 ओवर के बाद किसके मत्थे जीत का सहरा लहराता है, जीत का परचम किस टीम के सर पर लहराता है, ये देखना होगा. इस वक्त ये मुकाबला बिल्कुल इवन स्टीवन से मैं तो कहूंगा थोड़ा सा ड्राइवर सीट में अपने आप को पाती हुई इस वक्त टीम वॉरियर्स मोमेंटम उनके पास है. फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, उम्दा टाइमिंग, प्लेसमेंट भी बढ़िया. अनुराग अपने चांसेस को ले रहे हैं और वही भूमिका उन्हें निभानी है. कप्तान धून ने उन्हें ये भूमिका प्रदान की है कि आपको थोड़ा सा अटैकिंग खेलना है, आपको पिंच हिटिंग करना है, यही उसका प्लस पॉइंट है. और दैट गैम्बल इज paying off. The score at the end of 8 overs is 87. Yes, this is exactly why the game of cricket is a game of glorious uncertainties. Just a few minutes back, we never gave
any chance of this kind of a start to be exhibited. But there, both these guys are making a merry out there, Aniket and Anurag. एक रन की बढ़त, 8 ओवर की समाप्ति के 9वां ओवर यहां पर मार्गस्थ हुआ है, 88। यस, देखिए स्क्रीन पर वॉरियर्स को इस मैच को जीतना होगा 14.3 ओवर्स में अगर उन्हें सेकंड पोजीशन पे जाना है तो बहुत ही मुश्किल, असंभव। ये स्टैटिस्टिक भी हमारे ऐप ने प्रोवाइड किया है। टीम वॉरियर्स नीड टू विन दिस मैच इन 14.3 overs to get promoted to the second position. That is the scenario out here. Yes, Anurag once again proving to be the hurdle here. With that smartly taken single, what a throw there. It has, no, he's quite in. 90 for no loss. Anurag is on to 41 with that single. Daksh to Aniket. Yes, home, quite the right call, good decision. Very well played. A man in the deep, good piece of fielding, just a single added. With that single, the score now on to 92. And I'm sure that like every day, Mayura and Kosha will be ready to take charge of the mic during the drinks break to ask the questions and give away the prizes. Mayura and Kosha. एडवोकेट मेहरोत्रा साहब का भी हम स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग सर, काफी अरसे के बाद आपको देखा सर आज। यस, चलिए अब अच्छी एफर्ट वहां पर, नॉट इनफ। With that boundary to Anurag, dot shot boundary, he moves on to 45 of just 32 balls with the help of 7 dot shot boundaries and 1 K. Talsania construction 6. Just 1 6 has come in this innings of Team Warriors, and it has come off the blade of Anurag. Anurag once again proving to be a thorn there as far as Team Chargers is concerned. As far as Team Warriors is concerned, once again is playing the role of the savior, giving such good company to Aniket. And when somebody plays so naturally and accumulates those runs in quick time, the pressure is off Aniket then. And then in that kind of a situation, Aniket starts to get into his own and goes about his business clinical in a cool fashion. So Anurag is just about the right foil to a batsman of the caliber of Aniket. They complement each other so well. Yes, and Uday Bhai Jain is more than happy with the start. Uday Bhai Jain? Yes, he is happy. The match is evenly poised, man. This is going to be a great match. Maybe this match could be one of the very best, maybe the best in the round robin league format.
Yes, Amardeep Singh is also very happy. Yes, जबरदस्त शुरुआत है और एक मौका है. Yeah, there is definitely a big chance here now for Team Warriors. Anurag talking to himself, focusing. That was fired in very short, quite the right call. One extra run on the board. It takes the score to 98. 4 balls to come before the mid-innings break. That is the drinks interval. Nicely played on the up through the line. And well timed. He made it look so easy. With that dot shot boundary, Anurag now on to 49. Yes, just the way Daksh and Aryan Patni partnered these guys, Anurag and Aniket emulating them. A partnership of more than 100 runs in this pressure situation. Kya baat hai? 50 runs to Anurag. Goodness me, once again he's come good in style. Yes, he will be happy, but see, he's not celebrating. He's not celebrating and encouraging pat on the back from Aniket. He knows his job is not over, is not going overboard. I'm sure he'll take his guard again. He will recollect his thoughts. He'll focus once again. Yeah, we were expecting the same kind of an innings that Aniket is playing from his blade. But since the last 2 matches, Anurag has been like a breath of fresh air. So refreshing, great attitude, great approach. See, this is what pressure can do to you. They're trying to experiment now. They're trying to manufacture something out of the blue. It's a no delivery and this will be a bonus for Aniket. A free hit. जिस तरह से इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन इनिंग्स हम लोगों ने दक्ष के बल्ले से देखी, उसी तरह से चेस करते हुए सबसे बेहतरीन शुरुआत ड्रिंक्स के पहले आज के इस मैच में देखने को मिली है। 10 ओवर की समाप्ति पर 107 रन बिना कोई नुकसान के जबरदस्त शुरुआत। सबसे बेहतरीन इनिंग्स दक्ष के बल्ले से और सबसे बेहतरीन शुरुआत चेस करते हुए अनिकेत और अनुराग की तरफ से देखने को मिलती हुई। चलिए इस बीच में प्रसाद करकेरा से दरख्वास्त करता हूं कि आप प्लीज आगे आए। प्रसाद करकेरा, yes, over to Prasad. Yes, please. One of the senior players, Prasad Karkera, who's been watching the proceedings with a keen eye. He will soon be with us. यस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स प्रसाद करकेरा, जो कि खुद एक बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर है और सीनियर्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है।
प्रसाद, एक बेहतरीन मैच इस वक्त इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन इनिंग्स दक्ष के बल्ले से देखने को मिला और चेस करते हुए सबसे बेहतरीन स्टार्ट आज हमें टीम वॉरियर्स की तरफ से देखने को मिली। 107 रन 10 ओवर में। क्या कहेंगे, हु विल यू पुट योर मनी ऑन एट दिस स्टेज? More of friends are on the Chargers side. So I have to support the Chargers team. But basically, batting team is batting very well. Aniket is batting very well. And if wickets are not going to be, it's not going to be easy to take the wickets. But they have to take wickets. I think Vivek should be coming to bowl on very soon. सर दोनों ही प्लेयर्स मेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं एंड इट वाज अ गैम्बल टेकन बाय द टीम मैनेजमेंट ऑफ वॉरियर्स टू आस्क अनुराग टू डू द पिंच हिटिंग एंड दैट गैम्बल इज पेइंग ऑफ. Exactly, the way some shots he even played to Rajesh Patni, going out of the off stump and hitting him. It's not that easy because I played Rajesh Patni very well. So he's really batted very well, and it's not that easy the way he's played. He's changed the game basically. Yes, thank you. That was one of the senior members, senior players, Prasad Bhai Karkeria. Thank you. यस कुलदीप सर बिल्कुल मोहर लगाते हुए कि ये मैच वाकई में जबरदस्त मैच है, चाहे कोई भी टीम जीते, द गेम ऑफ क्रिकेट इज द विनर. और जीएससी T20 जिस मोड पे आज थमा हुआ है, मेरे ख्याल से ये मैच उस बेहतरीन टोन को सेट करेगा. ये बिल्कुल जबरदस्त मैच है, दोनों ही टीम्स ने क्वालिफाई किया है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगा. सुपर मैच और हैप्पी. अब गेंदबाजी करेंगे अनिकेत को. Walking into his shot, taking a few baby steps into the shot. This is good running by Anurag. Yes, this is not all about goodness me. The third run being taken. This is slightly sloppy work. Food for thought for Daksha. Daksha being tested here. This will be a very, very close match. The match nicely poised. What a start here. Fabulous start. The foundation has been laid here for an onslaught. What a partnership. Game-changing partnership from Aniket and Anurag. Wow, what a shot from Anurag. Fetching that ball from outside the off stump. Manufacturing a shot that really wasn't there. That shot coming off good. Ketal Sanya Construction, 6 to his credit, takes the score to 116. Goodness me, all wickets in hand. The partnership of 116 in this kind of a pressure cooker situation speaks volumes of the kind of batting that these guys have dished out. Absolutely fabulous. Match winning knock here from both these guys. Oh, goodness me. This for me was the moment of the tournament. Indeed, the moment of the tournament. This is pure magic, guys. Pure magic. This for me is the moment of the tournament. This is pure magic, man. What an effort. Goodness me, unbelievable, man. Unbelievable. Yes, he let that ball go just about in the nick of time. Brilliant, man. Wow. Great stuff. The captain leading from the front. Third umpire dekar Pradeep Bhai is taking a call. Yes, just we'll hold on, and Karan Bhai and Pradeep Bhai. Karan Bhai will have a good look at it.
Yes, we'll check. We'll make sure that the right decision is given. बिल्कुल रोमांचक मोड पे ये मैच है, लेकिन क्या एफर्ट दक्ष, सिंपली सुपर्ब, ब्रिलियंट एफर्ट. That's a 6. That's a 6. With that, K. Talsania construction, 6 off the blade of Anurag Bhimraj ka. The score now on to 122. 122 for no loss. No loss. A hat-trick of 6s. Goodness me. He's taking some stick here, under pressure, happy. 3 consecutive K. Talsania construction 6s off the blade of Anurag takes him to 62. 68. On to 68, Anurag. Looking for the second. Wow, it's such a swift runner between the wickets. They're looking for the third now. Yes, they are going, and no, says the umpire. Smart running, not just lusty hitting. This is smart running. ये सबसे फास्टेस्ट 3 रन्स होंगे इस टूर्नामेंट में, सबसे फास्टेस्ट. सच अ फिट प्लेयर. अनिकेत ने जिस तरह से रनिंग की है, माय गॉड, सिंपली सुपर्ब. Aniket is bringing all his experience into play, all his experience, and this man Anurag is following his instincts. What a start here! This is unbelievable. क्या बात है, इतनी बेहतरीन शुरुआत इतने बड़े मैच में, क्या बात है. मोमेंटम टीम वॉरियर्स के साथ. ड्रॉप किया है सीधे सीधा उनके हाथों में थे. पराग शाह मिसेस दैट. That was into him, and that was the wicket of the champion player Aniket. That could have brought about a change in fortunes. Yes, groundsman, please, can we थोड़ा सा क्रीजिंग करना होगा, क्रीज को पेंट करना होगा. मोती भाई, चलिए अब इस एक स्टैट आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं. 21 गेंदों में, आने वाली 21 गेंदों में 57 रन्स बनाने होंगे अगर सेकेंड पोजीशन में जा पहुंचना है तो. 21 बॉल्स एंड 57 रन्स टू विन. पता नहीं कि ये सोच भी उनके जहन में है या नहीं. वो उनकी थिंक टैंक उसके बारे में सोचेगी. ये हमारे ऐप ने जो स्टैटिस्टिक हमें कन्वे किया वो हम लोगों ने आपके सामने रखा है. 21 गेंदों में अगर 57 रन्स बना लेते हैं टीम वॉरियर्स तो ना केवल इस मैच को जीतेंगे बल्कि सेकेंड पोजीशन में जाएंगे. और अगर इस मैच को जीतते हैं 21 गेंदों के बाद तो जीत के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, सेकेंड स्पॉट पर नहीं आ पाएंगे. $57 रनों की दरकार 21 गेंदों में सीधे सीधा सेकेंड पोजीशन पर जाने के लिए. और इस मैच को जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट केवल 6.33 की रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को सीधे सीधा जीतने के लिए. लेकिन सेकेंड पोजीशन पे आने के लिए 21 गेंदों में
57 रन्स बनाने होंगे. That is what the app has projected. Pradeep bhai? So we are just going by the app. Thank you Pitch Vision for that stat. चलिए अब कल के ट्रम्प कार्ड को बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है. नाउ टेकिंग हिज चांसेस, एक गैम्बल लेते हुए यहां पर दक्ष. Yes, this situation warrants thinking out of the box, and that is what Daksh is exactly doing. He is trying to do something out of the blue here. He's keeping the batsman guessing. चलिए अब एक नया रोमांचक डायनामिक अब उभरता हुआ. 21 गेंदों में 57 रन्स बना लेते हैं तो फिर सीधे सीधा सेकंड स्पॉट पे जा सकते हैं. No, it just brushed his pad. एक अच्छी शुरुआत. अब चलिए रोमांच बढ़ता हुआ. बेहतरीन क्रिकेट मैच. जबरदस्त गेंद वहां पर ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन को शुरू किया था और फिर अंपायर ने नकार दिया तो अपने सेलिब्रेशन को भी रोका विवेक भाई ने. एक अच्छी शुरुआत, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए. क्या बात है, क्या बात है. अनिकेत जैसे बल्लेबाज को बीट करते हुए स्क्वेयर कट कर दिया है. वहां पर फील्डर मौजूद. चलिए अब ऐसी स्थिति में भीमराज का क्या करते हैं देखना होगा. ये एक इंटरेस्टिंग मूव है, दिलचस्प मूव है दक्ष का. ये गैम्बल लिया है. दिस गैम्बल कुड पे ऑफ, इट कुड गो ईदर वेज. So that really is the kind of a gamble that he had to take. He's taken it. Remains to be seen whether it pays dividends. 4 रन मिलेंगे बड़ी आसानी से. कोई फील्डर मौजूद नहीं. अनुराग बहुत ही जल्द तेजी से टॉप 8 प्लेयर्स में आते हुए टॉप 10 में. ये मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं कह रहा हूं. जो प्लेयर्स दोस्त मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स, मैच चेंजर्स बन रहे, तो मेरे ख्याल से पहले 7 या 8 प्लेयर्स में बिल्कुल आ चुके हैं अनुराग. आई एम नॉट गोइंग बाय द स्टैट्स, आई एम नॉट गोइंग बाय द बुक. दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन दैट ही इज स्टार्टिंग टू इंप्रेस वन एंड ऑल. अनुराग भीमराज का. Yes, this tournament is giving birth to new superstars. फिर से एक बार गेंद शायद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. डॉट शॉट बाउंड्री, लेग बाइस के रूप में बड़ी तेजी से जीत की तरफ बढ़ती हुई. जीत के दरवाजे पे बिल्कुल तहलका मचाती हुई टीम वॉरियर्स जोरों से दस्तक देती हुई. क्या बात है, बिल्कुल एक क्रांतिकारी बल्लेबाजी की है. बिल्कुल विपरीत परिस्थिति को मात देकर ये दोनों ही बल्लेबाज ने अपनी टीम को बिल्कुल जीत की कगार पे पहुंचाया है. एक गगनचुंबी शॉट, क्या पिकअप शॉट है. चलिए अब रोमांच बढ़ेगा. अब देखना है कि सेकंड नंबर के पोजीशन पे जाने के लिए अब क्या इक्वेशन है. 16 चेंडू आणि धावा पाहिजे ते 42. जर या टुर्नामेंटच्या पॉइंट्स टेबल मध्ये थेट 2 नंबरच्या पोझिशनवर जर यायचं असेल तर 16 चेंडू आणि धावा पाहिजे ते 42. 16 गेंदों में 42 रन बनाने होंगे. $16 balls and 42 runs to
straight away come into that number 2 spot. Yes, I think the umpires are signaling that there should be no disturbance around the side screen. So please, thank you guys. Aniket, the man on strike, he's on 45 of 31 balls with the help of 5 boundaries. And Anurag is on to 81. A chance for Anurag to get to the 3-figure mark. Kya baat hai? So many century makers in this tournament. Brilliant. Nicely punched away. We'll be looking for that second. We'll have to wait and watch. Smart running. Good pick up and throw. This is fantastic cricket. The throw at the right end. But Aniket safely home. Looks like Aniket is the fastest runner between the wickets in this tournament. The fastest. अगर sprint की competition होगी तो Aniket will really win it hands down. One more classic boundary to his blade. Deft touch. That's a smart shot. 50 runs up on the board for the champion player Aniket. क्या बात है, goodness me. इसके पहले के innings में 80 plus और अब 50 plus. Wow. What a player. Superb batting. The man with the orange cap. The star batsman, the superstar batsman. Not just a star, superstar batsman. Yes, side screen के बाजू से. Yes, थोड़ा सा. Thank you, gentlemen. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर अपनी टीम को बिल्कुल जीत की कगार पर पहुंचाया है अनिकेत और अनुराग ने. इस तरह के बड़े मैच में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन. क्या बात है. मेरे ख्याल में किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस तरह की शुरुआत होगी. मैंने तो नहीं सोचा था, टू बी फ्रैंक इनफ. सो नो गेम इज ओवर टिल द लास्ट रन इज स्कोर्ड और टिल द लास्ट विकेट इज टेकन. ये सेल्फ बिलीफ की बात है, आत्मविश्वास. Wow, what an effort, man. Brilliant, superb. This is mind-boggling, you know. ये सर चकरा जाएगा इस तरह की बल्लेबाजी को देखते हुए. जबरदस्त क्रिकेट मैच. रनों को सैलाब उभरता हुआ अनिकेत और अनुराग के बल्ले से. विस्फोटक बल्लेबाजी. Oh, he's taken in. Hopefully it is not serious. वो बिल्कुल एक थोड़ी सी सीरियस इंजरी होगी और इसी वजह से वो इतने सीरियस नजर आते हैं. Otherwise he would have really taken it in his stride. I hope it is nothing serious to affect his batting and bowling in the remainder of the tournament. We need Daksh both as a bowler and as a batsman in this tournament. We need him as a bowler and a batsman both. He is one of the brand ambassadors for this GSC T20, Daksh. Yes, indeed. चले इस बीच अनिकेत और अनुराग को हम थोड़ा सा सराहना करते हैं. जब एक इतना जबरदस्त लक्ष्य आप तय कर रहे हो और जब पूरी तरह से क्राउड को ऐसा लग रहा है कि इस मैच को नहीं जीत पाएंगे टीम वॉरियर्स, ऐसे हालात में बिना कोई विकेट खोए इतनी शानदार बल्लेबाजी करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है. दिस मैन आर ऑन अ मिशन. मिशन मोड में है दोनों ही. क्या बात है. असलम भाई भी पूरी तरह से सराहना करते हुए. चलिए, क्या इक्वेशन है भाई इस सेकेंड स्पॉट पे आने के लिए? 14.3 ओवर्स में इस मैच को जीतना होगा. यानी कि अब कितने गेंदों में कितने रन चाहिए? अब कितने में चाहिए? 13.5 में 14.3 में, यानी कि 6, 7 plus
10 balls, यानी कि 10 गेंदों में 35, 10 गेंदों में 35 रनों की दरकार, यानी करीबन हर गेंद पर चौका लगाना होगा, यानी कि 3 गेंदों में कम से कम 2 चौके लगाने होंगे। एक मौका है, चलिए देखते क्या वो गैम्बल लेते हैं, शायद लेंगे। आई होप दक्ष इज नॉट इंजर्ड बैडली। If he's injured badly, this could be a tragedy. Not just in this match, they've already qualified, but it would be a tragedy for the remainder of the tournament if we do not get to see Daksh in action and is in full form. Daksh, yes, one of the brand ambassador players alongside Aryan Patni, Aniket. He is one of the star players, Vedant Gadia, Yash Gadia. Yes, some star players. So we need these guys to be in action, full throttle. शायद थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन आज जितनी तारीफ हम टीम वॉरियर्स की करें उतनी कम होगी, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्रेडिट हमें टीम ओनर्स को भी देना होगा कि जिस तरह से पूरे कैंप में एक सकारात्मक माहौल बनाए रखा। दाद दूंगा मैं धून सुमैया की कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने टीम को लीड किया है। देखिए डीप एंड में 3 सीनियर प्लेयर्स गुफ्तगू करते हुए, विवेक भाई, नरसारिया, पराग भाई एंड दैट अदर जेंटलमैन। क्या काउंटर अटैक किया है, जबरदस्त काउंटर अटैक। The very best innings we have seen from Daksh in this tournament, the best century and the best chase. This is a fairy tale chase. जीत तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अब सुनिश्चित कर ली है, लेकिन विपरीत परिस्थिति को मात देकर शायद 10 गेंदों में 35 रन्स बनाकर सेकेंड स्पॉट पर भी जा सकते हैं, एक उम्मीद है। Yes, indeed, there is a ray of hope, a ray of sunshine. Maybe still, you never know. This is a script written here, a fairy tale script. Wow. Aslam Bhai has enjoyed the match so much. He loves to bat, but he will be more than happy to not walk onto the center pitch to bat in this match, given a chance to do so. जो टीम तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर ग्रैंड फिनाले को जीतने के लिए फाइनल में क्वालिफाई होगी, वही चैंपियन टीम कहलाने के हकदार होगी। Daksh is back. He will not come off the field. Nobody in this world can stop Daksh from continuing to play. He will keep continuing to play. But I hope that injury is not too serious, because if they come in the top 2, they have to play tomorrow's match. What a cricket match. What a cricket match. जो भी दर्शक यहाँ पर इस मैच को देख रहे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक तगड़ा मैच देखने को मिला। अच्छी टाइमिंग वहां पर, बाउंड्री मिली, यानी कि अब 9 गेंदों में 31 रन, 31 टू विन ऑफ 9 बॉल्स इज द सिनारियो। इस मैच को जीतना है कितने 14.3 ओवर्स में इस मैच को जीतना है सेकेंड पोजीशन पर आने के लिए। इस वक्त 13 गेंद हो चुके हैं, यानी कि 9 गेंदों में अब रन्स बनाने हैं 31। 9 balls and 31 runs to get amongst the first 2. This is now the bone of contention. मैच तो शायद बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, केवल 31 रन चाहिए, लेकिन अब एक नया रोमांच उभर कर आया है। क्या 9 गेंदों में
अनिकेत और अनुराग वो 31 रन्स बनाते हैं, ये देखना होगा। चलिए क्या बात है, one would have traveled miles and miles to watch this kind of cricket match. Those who have come to watch this cricket match are the privileged ones, you know. Indeed, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूं कि इस तरह के मैच को मुझे डिस्क्राइब करने का मौका मिला। What a cricket match! This is what we live for, you know. यही तो क्रिकेट के वो पल है जो हमें आगे हमारे लाइफ में ले जाते हैं। मेमोरेबल मोमेंट्स, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, डेफिनेटली दिस चेज विल बी रिमेंबर्ड एट द Goregaon Sports Club for a long time, and indeed a lot of nostalgia will be created courtesy this innings, this chase. Mind you, not this innings, this chase. मेरे ख्याल से एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बन सकती है इस तरह के फेरी टेल चेस पर। देखिए अनिकेत को पता है कि ये बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, ज्यादा एग्रेसिव मोड में, और सेंचुरी बनाने की भी एक उम्मीद है। तो स्ट्राइक एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह उन्होंने अनुराग को स्ट्राइक दी है। इफ एनीबडी कैन डू इट एट दिस स्टेज, इस चमत्कार को अगर वाकई में हकीकत में अगर कोई बदल सकता है तो वो है अनुराग। चलिए नो मैंस लैंड में गिरेगी ये गेंद, दूसरा रन जरूर लेंगे। चलिए उन दो रनों के साथ रन संख्या अब 161 रनों पर 28 रन बनाने होंगे। 8 गेंदों में 28 रन, 8 balls and 28 runs to straight away be at the number 2 spot, in with a chance statistically possible. And the way these guys are batting, it is indeed a scenario which is looking to be a possibility. Down on his knees, misses out Anurag. 7 balls and 28. यानी कि अब हर गेंद पर चौका। Yes, Moira, whom are you supporting? Could be a catch. He misses out. Boundary being given by the umpire there. Not short boundary. That should have been a catch. चलिए अब 6 गेंदों में कितनी गेंद, नहीं 7 गेंद में 28 चाहिए था। बाउंड्री कितनी गेंद 14.3 में बनाने हैं, यानी कि अब 5 गेंदों में 24, 5-24। Daksh is there, the injured warrior. चार 22। बाईस के रूप में चौका। तीन गेंदों में 3 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन सिक्सर्स, 3 गेंदों में 18 रनों की दरकार सेकंड स्पॉट पर जाने के लिए। चलिए अब ये गेंद, अब आने वाली ये गेंद इस मैच का और इस टूर्नामेंट का रुख तय करेगी। ना केवल इस मैच का बल्कि इस टूर्नामेंट का रुख तय करेगी ये अब आने वाली गेंद। बिल्कुल
This will be the deciding delivery. अगर 6 लगता है तो फिर 6 लगती है तो उम्मीद मार्गस्त होगी. अगर if it's not a 6, it will be all over. चलिए पॉइंट्स टेबल की तरफ रुख मोड़ते हैं. टीम राइडर्स 12 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल. टीम चार्जर्स नंबर 2 स्पॉट 10 पॉइंट्स. सुपर किंग्स 10 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 मैचेस. चले इंटरेस्टिंग टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस मैच के बाद. Aryan Patni, Aniket, the man on strike. Can Aniket do it? Can Yuvraj Singh get into his psyche? Yes, Yuvraj would have wanted Stuart Broad, but here it is at the GSC. Aryan 2, Aniket. He's capable, isn't he? Asking of too much, asking of a miracle. But miracles do happen. Miracles do happen. Can we witness one? Are we about to witness a miracle here? This ball will definitely decide. Aryan Patni. Oof, what a cricket match, man. What a cricket match. If Daksh's team makes it to the first two and they have to play that qualifier tomorrow, the big question is whether Daksh will be fit to play tomorrow's match. That is also one more scenario that comes to the fore. And he's been given out. The dreaded finger goes up. Aniket taking that walk back to the pavilion after having played a brilliant innings of 53. And that will be a huge sigh of relief. We'll check the legality. Yes, it's a fair delivery. Daksha will be a relieved man. The whole team, the whole camp. But this is brilliant by Team Warriors. Goodness me. And now to replace Aniket, it is Aslam Bhai. (171) रनों की पार्टनरशिप टूटी. क्रीज से दामन छूटा अनिकेत का. 171 रनों की पार्टनरशिप को ब्रेक लगी. क्या बात है, क्या क्रिकेट मैच. जितनी तारीफ हम करें उतनी कम होगी. कैन वी हैव द प्लेयर प्रोफाइल ऑन स्क्रीन? यस दक्ष. इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा. पॉइंट्स टेबल लेग बाइस के रूप में एक रन वहां पर जुड़ा. रन संख्या 172 रनों पर. उस विकेट के बाद वो अब सिनेरियो बिल्कुल इट्स आउट ऑफ द विंडो एंड नाउ बैक टू सम सैनिटी इन द मैच. Yes, we are back to some sanity in the match. ये बिल्कुल जिस तरह का क्रिकेट देखा बिल्कुल सर चकरा रहा था, अब थोड़ा सा this is now sanity back in the match. Cricket till this earlier delivery was insane. That was insane onslaught by Anurag and Aniket. This will be a huge relief here.
नहीं नहीं, यस, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि कैलकुलेटर्स में इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द ऐप. वी डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क. Yes, we have been advised not to jump the gun, and we will do so. Will not do it. Will not jump the gun. We'll try to be cool. हम लोग भी सब टेंशन में यहाँ पर. We all are on the edge of our seats. हम ऐसे हालात में चुप्पी साधे रखेंगे, बरोबर? चलिए, असलम भाई के बल्ले से अच्छा स्ट्रिकी शॉट, वहां पर 2 रन बड़ी आसानी से मिले. 2 रनों के साथ रन संख्या अब 175 रनों पे ऑफ द मार्क है असलम भाई. अब ज्यादा कोई धमाल न करते हुए जीत को केवल सुनिश्चित करती हुई टीम वॉरियर्स. अनुराग, चलिए इस बीच 94 पर जा चुके अनुराग. 94 पर. चलिए, ये और एक रोमांच. क्या बात है, ये एक और एक स्टैटिस्टिक यहां पर आता हुआ. यस, ही डिजर्व्स दैट सेंचुरी. दो रन ले लिए, तीसरा रन भी ले लिया वहां पर ऑफ द स्ट्राइक नाउ. नहीं, क्योंकि लास्ट बॉल थी ओवर की समाप्ति. गुड थिंकिंग. 15 ओवर की समाप्ति के बाद 179 फॉर 1. 10 रनों की जरूरत, 30 गेंदों में 9 विकेट हाथों में. अनुराग 97 पे जा पहुंचे हैं. 52 गेंदों में 11 बाउंड्रीज और 5 छक्के के बदौलत. क्या बात है. और एक सुपरस्टार यहां पर जन्म लेता हुआ. सेंचुरीज मेरे ख्याल में, जैसे कि कुलदीप पाजी सर ने बताया कि 7 से 8 सेंचुरीज हो चुकी है. जबरदस्त. इस मैच में 2 होने के आसार, संभावना अब तक नहीं हुई है. 6 सेंचुरीज हो चुकी है. ये 7वां सेंचुरी इस टूर्नामेंट में हो सकता है. गेंदबाज नहीं. Nicely leaning into that shot. A single easily taken. With that single, the score now on to 180. And Anurag into the nervous 90s, 98. Not nervous 90s because this is a T20 game. Their team is on the threshold of a very massive victory. It's a massive victory. Not just a victory. This will dent the psyche of team Chargers. तगड़ा शॉट. अनुराग वाज होपिंग दैट ऐसा शॉट न लगे, लेकिन लगा वहां पर. उस चौके के साथ रन संख्या बड़ी तेजी से बढ़कर अब 184 रनों पर. अभी यह एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता यहां से ना भाई. 184 for 1, 15.2 overs. असलम भाई द मैन ऑन स्ट्राइक. एंड व्हेन असलम भाई हिट्स द बॉल, और यही मैसेज कुलदीप सर आपका मैसेज गया है. ये सेंचुरी अगर बिमराज का को मिलती है तो मेरे ख्याल से उसको उठाकर लाएंगे वापस पेविलियन में.
चलिए, एक नया प्लेयर जब सेंचुरी लगाएगा, न्यू सुपरस्टार विल बी बॉर्न, विच इज गुड फॉर द गेम. असलम भाई ने मन बनाया कि एक ही रन लेंगे, मन बना लिया है बिल्कुल. और यस, मुझे हाँ कहते हुए. चले, इस ओवर में 4 गेंद मुकम्मल हो चुकी है, 2 गेंदें आनी बाकी. रन संख्या 185 रन. मैच जीतने के लिए 4 रन चाहिए और अनुराग इस वक्त 98 पर है. अब यह मौका मिला है पूरा अनुराग के हाथों में. चले, अब असलम भाई को डॉट गेंद खेलनी है. हम जो कि बहुत ही मुश्किल है करण भाई बताते हुए. सही फरमाया. नॉट इजी फॉर असलम भाई टू प्ले अ डिफेंसिव शॉट. या बट he'll do it. क्योंकि ना केवल मुंबई शहर के गार्डियन मिनिस्टर है बल्कि इस टीम के भी गार्डियन है, तो इतना तो बनता ही है. नॉट जस्ट द गार्डियन फॉर द सिटी ऑफ मुंबई बट ऑल्सो द गार्डियन ऑफ द होल टीम. Yes, 3 more to win now, and the man of the moment, Anurag Bhimrajga, playing on 99 not out, 3 to win and 1 for the century. The man on strike, Anurag. हमारा ऐप भी आज चकरा जाएगा कि किससे मैन ऑफ द मैच दे. That app might be also working overtime. चलिए, क्या बात है. What a cricket match. इसके पहले ये टूर्नामेंट में किसी भी मैच में 2 सेंचुरीज हम लोगों ने नहीं देखी है. आर्यन bowling to Anurag, playing on 99 of 54 balls with 11 boundaries. No, says the umpire. Yes. Theatrics on. Theatrics on. Still tension. रोमांच बरकरार, सभी दिल थामे हुए बैठे हैं. Everybody on the edge of their seats. Chaliya, century to the blade of the man of the moment. Yes, he's pumping his fists in the air, and why not, man? What an innings. चले, ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की धरती पर एक और एक सुपरस्टार जन्म लेता हुआ और एक बाहुबली प्लेयर. क्या बात है. और किस स्टेज पे जब ये टीम बिल्कुल क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स खेल रही है. व्हाट एन इनिंग्स मैन. क्या बात है. Superb, man. Anurag, this is good for the game. This is good for GSC T20. Aslamba hits those winning runs. Yes, so what a victory, man. This is almost an improbable victory. बहुत ही जल्द हम points table screen पर पेश करेंगे. That will take some time. Even the app is working overtime. Let us see. प्रमोद भाई, नॉट इजी बट इस बीच जितनी हम तारीफ करें इस चेस की उतनी कम होगी. 2 सेंचुरीज एक ही मैच में, और जिस तरह का चेस यहां पर इन लोग ने दर्शाया, स्क्रिप्ट किया, सबसे फैबुलस चेस. शायद इस तरह का चेस पूरे टूर्नामेंट में शायद और आने वाले सीजन में भी शायद देखने को न मिले. कुलदीप सर, पहले भी ना कभी देखने को मिला है, ना शायद आने वाले सीजन में देखने को मिले. व्हाट अ क्रिकेट गेम, व्हाट अ मैच मैन, व्हाट अ मैच. अनुराग, वेल प्लेड गाय,
Well played, buddy. And Aniket Kavde. Wow, once again, what an innings. Yeah, what a champion player you are. Indeed, huge player. The stalwart at the GSC. Aniket, the man with the orange cap. Yes. चलिए अपडेटेड पॉइंट्स टेबल हम देखेंगे. चलिए ये फाइनल पॉइंट्स टेबल देखने को आपको मिलेगा. कल से पॉइंट्स टेबल का शायद काम समाप्त हो जाएगा. टीम राइडर्स नंबर 1, टीम सुपर किंग्स नंबर 2 पर. तो कल का मैच टीम राइडर्स और सुपर किंग्स के बीच, क्या बात है. ये शायद मैं कहूंगा एक शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है. एक थोड़ा रिकवरी करने के लिए दक्ष को एक मौका मिलेगा. कल का मैच द फर्स्ट एलिमिनेटर, माफ कीजिएगा, द फर्स्ट क्वालिफायर टीम राइडर्स वर्सेस टीम सुपर किंग्स. कल का मैच ठीक 6:30 बजे. द फर्स्ट क्वालिफायर टीम राइडर्स एंड टीम सुपर किंग्स. क्या बात है. करण सर, कश्यप सर. Yes, Churi, good evening, and I'll just give all of you a couple of minutes to get in front of the presentation arena. And what a great cricket match. Thank you, Jude bhai. Yes, tomorrow's match there on screen, qualifier number 1, Riders versus Super Kings. At 6:30 p.m. we go live and exclusive on the Goregaon Sports Club NG and on YouTube and Facebook page GSC Club Official. Tomorrow we go live at 6:30 p.m. sharp with the toss.
Yes, may I request Karan Bhai Singh Walia to please escort our guest on stage, Karan Bhai. Yes, Karan Bhai Singh Walia, the man of the moment, the dynamic outdoor sports committee chairman, Karan Singh Walia sir on stage. May I request our founder member KK Jain Saab to please come up on stage. Our cabinet minister Aslam Bhai, please you need to come up on stage. जोरदार तालियां असलम भाई के लिए, KK जैन साहब के लिए. परमिंदर भामरा जी पूर्व नगर सेवक, उनसे भी विनती करता हूं कि आप स्टेज पर आए. परमिंदर भामरा जी, निखिल भाई पटेल, the owner of team Gladiators, नितिन भाई सिंगल, गवर्निंग काउंसिल मेंबर उदय भाई जैन, कृष्णा भाई जैन, अमरदीप भाई भराज, कुणाल भाई पारेख एंड नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी. प्लीज आप स्टेज पर, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी स्टेज पर आए. यस, कुलदीप पाजी सर, कुलदीप सर प्लीज यू नीड टू कम अप ऑन स्टेज. नितिन सिंगल जी प्लीज आप स्टेज पर आइए. के जैन साहब अलॉन्ग साइड असलम भाई, परमिंदर भामरा जी, निखिल जी पटेल, नितिन जी सिंगल, उदय भाई जैन, कृष्णा भाई जैन, अमरदीप भाई भराज, कुणाल भाई पारेख एंड yes, Virendra Chaudhary. Yes, can we have team? Yes, Daksh. Daksh, please, can you get your team here? Yes, cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. It is prize distribution time. Yes, the last league match of this round robin league format has just about been completed, and may I request Daksh to please come up on stage. Can we have a round of applause for Daksh? Welcome Daksh. The first guys, can I have your attention please? Yes, thank you so much. Daksh, how's your hand? It's good. It's not actually that much, and I don't really want to think about what's happened to my hand. The more I think about it, the more it will affect my game. Yes, unfortunately that century, which was indeed one of the best knocks of the tournament, unfortunately had to end up on the losing side, and that was one of the best chases that you will ever see at the Goregaon Sports Club, courtesy Aniket and Anurag. Your remarks on that fantastic chase? No, actually, they didn't even give us a moment to, think that they are going for the chase in the 16th over. Pathetic fielding from my team. I wouldn't like to be as decent as I can. Fielding could have actually... I remember saying it on the 7th of December against Team Riders when we won. That, the position of my team, the winner is only going to be decided on the basis of fielding. Our fielding is the only thing that has let us down. And hopefully we field better in the eliminator and overpower all the other teams and see the other teams in the final. Yes, thank you. And as we get into the business, and even Daksh starting to mean business as far as his captaincy is concerned. Well played, and that was a fantastic game that you guys played. No credit can be taken away from that fantastic match that you played. And now may I request, yes, धुन है, जिन्होंने जबरदस्त धुन मचाई है आज. Yes, क्या बात है. Dhun, because you are a good sportsman, I am sure that you will be absolutely honest with the answer that to the question that I am going to be asking you. मिड इनिंग्स ब्रेक में क्या आपने सोचा था कि इस मैच को आप जीतोगे? देखो, जीतने का तो सोच के ही रखा था, पर 14.3 में कंप्लीट करना था वो इनिंग्स, तो हम लोग थोड़ा डाइसी थे. मैंने बोला गब्बर को जाने के लिए, असलम भाई ने बोला कि गब्बर और बाबा को भेजने के लिए एक ट्राई करते हैं, तो दे रियली प्लेड वेरी वेल एंड वेरी वेल प्लेड. दक्ष किधर गया? वेरी वेल प्लेड भाई. यस, अनिकेत तो जितनी तारीफ करे कम है. ही इज लिविंग अप टू द बिलिंग ऑफ बीइंग वन ऑफ द स्टॉलवर्ट बैट्समैन. तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था. आई मीन नो सरप्राइजेस हियर. लेकिन अनुराग, ही इज
the flavor of the season towards the end stages? बाबा तो फादर फिगर है हमारे टीम के, वो उनके सामने किसी की भी नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती। और गब्बर 32 lakhs जो है वो अभी वर्थ दिखा रहे हैं हम लोग को, और बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे टीम को। Thank you and wish you all the very best. Thank you, Dun. And now, yes, असलम भाई, क्या जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी आसानी से एक क्लिनिकल चेस आप लोग कर पाओगे, लेकिन शानदार जीत सर। क्या कहेंगे दक्ष के लिए भी और उनकी टीम के लिए और अपने आप की टीम के लिए जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। वो टू असलम भाई। मेरे ख्याल से दोनों टीम के जो दो प्लेयर्स थे आज फैंटास्टिक उन्होंने खेला, और मुझे यहाँ लगता है कि सारे लोगों को वो जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसी का एक रिप्लिका आज हमें गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में देखने को मिला। बोथ द टीम डिड नॉट फील्ड प्रॉपर्ली, बट आई थिंक सो टुडे वाज द डे ऑफ वॉरियर एंड आई थिंक सो दे डिजर्व्ड आल्सो, एंड फैंटास्टिक अटेम्प्ट बाय द कैप्टन। आई थिंक सो यू आल्सो डिजर्व अ लॉट ऑफ applause फ्रॉम एवरीबॉडी ओवर हियर। You tried, you knew the team is going to lose, but you fought till the last ball. I appreciate you all people. Thank you for doing a fantastic match over here for both the teams. Thank you so much, Aslam bhai, and quite rightly said that effort from Daksh will indeed go down in the books as the most glamorous moment of the tournament. What a great effort. And now to do the man of the match award honors, I'll request Aslam bhai to do it. And yes, straight away, Gabbar, you need to come on stage. क्या बात है? Yes, his innings of 100 runs of 57 balls, and he bowled 4 tight overs, giving away just 28 runs. Yes, Aslam bhai will give away the prize, and then we'll have a chat with Gabbar. क्या बात है, a big round of applause. Yes, well deserved. Yes, yes, Anurag, you are coming to the party towards the business end, और जबरदस्त बैटिंग की है। क्या चल रहा था आपके मन में इस चेस के पहले? We had a discussion before the match that we need to go for the chase, like be it like in 14 overs, 15 overs, be it 140, be it 190, we need to chase this down, because we knew even if we lose, we are in the top 4. So we needed to go for the kill, and Aslam bhai gave us the confidence that Gabbar tu ja starting se hi maar ke aa. So yeah, that confidence was needed to the team, and I think Baba pehle match se he's playing fantastically, and he needed a support from the other end. Aslam bhai gave him that support for the starting 4-5 matches, and someone from the team had to step up, and why not myself? Yes, so well said, and this is good for GSC that superstars ने 6 centuries लगाई है। अब तक आप सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन कल से आप सुपरस्टार हो गए। So this is good for the game, a surprise package. The century maker Gabbar, one more round of applause for him. Yes, sir. Last year I had a dialogue, since my name is Gabbar, that Gabbar is back. But this year, owing to my fitness and everything, I didn't say it. But yeah, I can finally say that Gabbar is back. Yes, Gabbar is indeed back, and there's one very special award to be given away, which I really do not know. Over to Karan Bhai Singh Walia. And we have a new orange cap winner, and I think it will be rightful to call him now Daddy of Cricket in Goregaon Sports Club. आज से सब इनको डैडी के नाम से बुलाएंगे। कैप इज ऑन दी वे, तो बट हमने कहा ये अनाउंस कर दें आज। और मैं पर्सनली पूछना चाहता हूं बाबा से कि मतलब इतने रन किए, इतना अच्छा खेले, सेंचुरी बनाई, पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक साइड निकाला, पूरी की पूरी वॉरियर टीम को संभाल के रखा हर मैच में। व्हाट वाज योर थॉट राइट फ्रॉम द मैच 1 टिल टुडे? ऐसा कोई थॉट नहीं था, थॉट था कि जीतना है, दैट्स इट।
यही हम लोग का मोटिवेशन था और यही हम लोग की सोच है कि वी वांट टू विन एट एनी गिवन कॉस्ट। तो आज भी हम लोग का यही था कि हम लोग इसको चेस करें, बट अनफॉर्चुनेटली वी फील्डेड बैड और हमने कुछ 30-40 रन एक्स्ट्रा दे दिए। तो हम लोग आज भी गेम में थे कि हम लोग 13-14 ओवर में हम लोग को सबको कॉन्फिडेंस था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला था, सब लोगों को था। बट 180 के बाद थोड़ा डाउट था, तो हम लोग थोड़ा रुक के खेले, बट एनीवे वी वन द मैच, दैट्स इम्पोर्टेंट। और शुरू से ही पहले मैच से ही मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव एवरीबडी इज अ मैच विनर इन आवर टीम। ये मतलब अनफॉर्चुनेटली कि मैं आया हूँ दो बार, बट आई एम सेइंग कि हम लोग में हम सारे लोग मैच विनर्स है एंड आई एम हैप्पी कि धीरे धीरे करके एक एक आ रहा है एंड गब्बर इज रियली बैक। दक्ष ने जब 100 बनाया था, उसके साथ आर्यन ने 50 बनाया, फिर जिस ढंग से वो लोग बैटिंग कर रहे थे, तुमको ऐसा लगा कहीं के 20-25 रन कम हो गए या वो 200 की तरफ जा रहे थे? तुम्हारी टीम ने अच्छा कंटेन किया उनको 190 में ऑल आउट करके? नहीं, जब मैच के शुरुआत से पहले ही हम लोग ने सोचा था कि 170 तो स्कोर होगा, तो हम लोग हर मैच में हम लोग सोचते हैं कि 170 तो होना ही होना है। तो अभी 170 का ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम वो ऑप्शन से खेलते हैं, हम उनकी स्ट्रेटजी से नहीं खेलते, वो जितना भी बनाए। लेकिन हम लोग पहले ही दिन से प्लान करते हैं कि 170 कैसे चेज होगा, उसी प्लान से हम लोग आगे चलते हैं। फिर बाद में वो 170 मारे, 190 मारे, 200 मारे, इट डजंट मैटर। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि सामने की टीम 200 मारे, 250 मारे, 225 मारे, ये 170 की डील से चलेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। सही है ना? और इसी के साथ मैं असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑरेंज कैप देंगे अभी बाबा को। यस प्लीज। एंड वी हैव अ न्यू ऑरेंज कैप विनर। ये Yes, congratulations indeed. Yes, सच धज के ये ऑरेंज कैप बाबा के सर पर संवरती हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक 40 प्लस को ये ऑरेंज कैप मिली है। मेरे लिए तो आई मीन एज तो नंबर्स है, मेरे लिए देखने वाले लोग हैं जैसे रफाल नदाल जिसने अभी टूर्नामेंट जीता, तो वो अगर 40 में जीत सकता है, या जेम्स एंडरसन अगर बॉलिंग में 600 विकेट निकाल सकता है, या धोनी अगर आईपीएल खेल सकता है, तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, आई जस्ट गो ऑन माई फ्लो, और मैं मेहनत करता हूँ और उसका मुझे फल मिलता है, तो मेहनत करना चाहिए सबने। So everybody should work hard from now onwards. Thank you. Yes, he's let the cat of the bag, cat out of the bag. That the inspiration comes from somebody like Rafael Nadal, and yes, the strongest player mentally and also potentially. Well done, Baba. And with this, we come to the end of this beautiful evening. That was a fantastic cricket match. Tomorrow's first qualifier, Team Riders versus Team Super Kings. That we go live at 6:30 p.m. When the coin will be flipped. Tomorrow 6:30 p.m. all are requested to make it Team Super Kings versus Team Riders. Good night. God bless you all. Shabba Khair. Have a good night.